Hello everyone, this is Sudipta welcoming you all to StudyIQ OPSC. So आजिर सेशन बहुत ही इंपोर्टेंट आपण मानक पई बिकॉज ओडिशा पुलिस एसआई हमर कोन पोस्टपोन हो जाइछ ठीक अछि सो पोस्टपोन हेबा फल किछि पिला बहुत ही डिमोटिवेट हो जाउचंदी बिकॉज प्रिपरेशन से भल करिथिले एंड चाहुथिले एग्जाम जल्दी जल्दी हो जाऊ बट जो मानकर प्रिपरेशन टिके लैक थिला या फिर जो माने प्रिपरेशन भल से भी करिसंदी से मानक पई तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी से माने आउ थरे रिवाइज करि परिबे इज नॉट दैट सो लेट न करिके आमे देखिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोन सब ऑलरेडी ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम रे पक्कै सारिछि ता अकॉर्डिंग हमर प्रिपरेशन करिबा ठीक अछि सो लेट न करिके फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा गाइस द क्वेश्चन इज ए ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स देखंतु आपन ए फॉर्मेट रे मिलियो बिकॉज़ मु डायरेक्ट क्वेश्चन रू आपन मानकर स्क्रीनशॉट आनि के लगै छी ठीक अछि देखंतु ए ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड a group of glands that produce various glands is called what respiratory system, excretion system, endocrine system or central nervous system कोटा हबर जोटे गोटे various glands produce करूची group of glands produce करूची various hormones ओके ताकू कोन कहै जिवो को ग्लैंड कह जिवो या फिर को सिस्टम कह जिवो देखंतु क्वेश्चन अकॉर्डिंग कोन हमर अछि कि को सिस्टम कह जिवो कोन हबो ना दिस इज एंडोक्राइन सिस्टम ओके नॉट रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉट एक्सक्रीशन नॉट सेंट्रल नर्वस सिस्टम बट दिस इज एंडोक्राइन सिस्टम ओके व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम ना a network of glands that produce and releases hormones a network of glands that produce or releases hormones is known as what endocrine system and those hormones regulate various functions like kon growth hormones baharuchi metabolism amara help karuchi metabolic hormones baharuchi reproduction hormone baharuchi kotiru amara endocrine system ru ओके एंड सबुटु की एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड करूची कोटा ना पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड्स एवरा होची कोन हमर सबुटु इंपोर्टेंट ग्लैंड ओके लेट्स सी समथिंग पिक्चर अछि देखंतु कोन रहिला ना पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड टेस्टिस भी रहूची पैनक्रियास रहूची थाइमस रहूची पिनियल ग्लैंड भी रहूची ओके व्हाट इज गाइस देखंतु हमर कोन अछि ऑप्शन ने ना रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक आमे तो जानले कोन ना हमर सब ऑप्शन रे जेमति अछि एंडोक्राइन सिस्टम विषय जानले बट रेस्पिरेटरी सिस्टम रे कोन इंक्लूड करिवो ना दिस सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर कोथि पई ना ब्रीथिंग पई रेस्पिरेटरी माने कोन हमर ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज रे हेल्प करिवो दिस सिस्टम विल हेल्प्स इन ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज ब्रीथिंग and gas exchange रे help करिवो ओके एंड एटा कोथरे इंक्लूड करूची को बॉडी रा पार्ट्स हमर इंक्लूड होची जेमिति लंग्स होची ट्रैकिया होची ब्रोंसी होची एंड द कोन डायफ्राग्राम होची ओके सो आमर एक्सक्रीशन इज द मेथड ऑफ कोन ना रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी एक्सक्रीट करूची एग्जिट करे दबो कोन रिमूव waste product from the body that is excretion and what is the central nervous system सेंट्रल कथा कहला माने कोन ऑब्वियसली सेंटर रे थिबो सो कोडा हबो ना कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड CHORT कर दे CORT and यार मेन्स फंक्शन कौन रहिबो एटा कंट्रोल कौन करूची ना इट कंट्रोल्स फंक्शंस कोन फंक्शंस थ्रू आउट टोटल हम बॉडी रे लाइक स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करी की बोथ हमर ब्रेन ही सब करूची ना
द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सहित जिते नर्वस सिस्टम आमर फिक्स होगी अच्छी सब गुड़ा कर लाइक थॉट प्रोसेस है एंड आमर रिफ्लेक्स एक्शंस है सपोज जमीती आम जाचे एव्री एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सपोज गोटे मशाटे आमको कामुड़ी तो आमर ब्रेन आमको राइट हैंड को इंस्ट्रक्ट करुच्ची देख तो लेफ्ट हैंड में मशा कामुड़ी बाड़ा जदि आमर ब्रेन न था जदि इंस्ट्रक्शन सेमली न था देन आमर कौन यहाँ हो पारि न था सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेन जोटा कि आमर कौन ना ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड को लेकिन फंक्शन करोछि ओके नेक्स्ट देखिबा एंड एटा को मन रखिबो एटा को गोटे नर्वस सिस्टम अंडर ए क्लासिफाइड हबनी ओके इट इज नॉट क्लासिफाइड एज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेटिक फाइबर which of the following is not a synthetic fiber the options are nylon polyester acrylic or silk कोटा गोटे सिंथेटिक फाइबर नुह देखो नाइलॉन गोटे कौन ना यहाँ गोटे आमर फुल्ली सिंथेटिक फाइबर दिस इज ए फुल्ली सिंथेटिक फाइबर ओके एटा मेड अप ऑफ व्हाट ना पेट्रोकेमिकल्स मेड अप ऑफ व्हाट नाइलॉन आर मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड द पॉलिस्टर ये भी आमर गोटे सिंथेटिक फाइबर जोटा कि कोथुरु ना सेम पेट्रोकेमिकल्स रो आमर डिराइव्ड हेछि एंड एक्रिलिक एक्रिलिक भी आमर गोटे कौन पेट्रोकेमिकल्स री डिराइव होइथिबो ना एक्रिलिक कोथि ना गोटे सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल्स वूल ओके जोटा गोटे कौन सिंथेटिक फाइबर आमको पचारि कोटा गोटे सिंथेटिक फाइबर नुह एक्रिलिक दो एक्रिलिक इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल स्टिल दिस इज अ व्हाट ना सिंथेटिक फाइबर बट अडवान आउट करेंगे कौन ना सिल्क रमर कौन ना इज नॉट ए सिंथेटिक फाइबर दिस इज व्हाट दिस इज ए नेचुरल फाइबर ओके कौथुरु बाहरुची ना obtained from silk worms this is obtained from what ना silk worm and this is a natural fiber okay clear about this next question देखो so these all are synthetic fiber but the silk is odd one out this is a natural fiber so types of fiber भी टिके मन रखि दबो को टाइप्स रो एंड कोरा तरह कैटेगराइज हेची ठीक अछि so कोन रहइबो the unit of current is current रो यूनिट कोन रहउछि हमर ऑप्शन आर ओम वाट एम्पियर और none of this को अपन तो छाड़ी दियंतु कोटा रहइबो ओम ना वाट ना एम्पियर कहार ना हमर करंट रो ओम टा कहार रहइबो ना दिस इज अ एसआई यूनिट ऑफ कहार ना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रो कहार ना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वाट कहार रहउची वाट हमर रहइबो कार ना हमर सॉरी पावर रहिबो कार ना पावर वाट whereas ampere is the unit of कार ना current रहिबो ampere okay guys clear about it next देखो so मेन की किछिटा हमर कोन जोटा कि इलेक्ट्रिक पैरामीटर अच्छी एंड यूनिट तार जोटा कॉमनली एग्जाम रे पड़े तोड़ा अपन मन रखि देथिबे सपोज वोल्टेज रो कोन हला वोल्ट हला सिंबल होइला कोन V और E ता अकॉर्डिंग अपन मन रखि रेजिस्टेंस रो कोन ओम रहिबो कैपेसिटेंस रो फैराड रहिबो चार्ज रो कूलम रहिबो इंडक्टेंस रो हेनरी रहिबो पावर रो वाट्स रहिबो इंपेडेंस रो ओम रहिबो फ्रीक्वेंसी रो कोन हर्ट्ज रहिबो देखंतु रेजिस्टेंस आ इंपेडेंस देहे गोटे मिनिट ओके इम्पिडेंस एंड रेजिस्टेंस जेहेतु दीटा जाक सेम अच्छी ताकू टिके कंबाइन करके मन रखिबो नेक्स्ट हर्ट्ज अच्छी कहार फ्रीक्वेंसी रो हर्ट्ज कंडक्टेंस रो सीमेन ओके विथ तार सिंबल टिके टिके मन रखि देथिबो मे बी एग्जाम रे आसी जिवो जति सिंबल वाइज बहुत रेयर आसे बट यूनिट टा मोस्ट क्वेश्चन आसे ओके नेक्स्ट देखो द प्रीडोमिनेंट गैसेस दैट कंस्टिट्यूट द सन आर
the predominant gases that constitute the sun are like कौन हबो sun रो gas कौन अच्छी sun रो atmosphere रे what are those hydrogen and helium, hydrogen and methane, methane and helium or methane and carbon dioxide. Koda habo na the options hydrogen and helium will be the right one. Okay, and the sun is primarily composed of kona na hydrogen and helium. Hydrogen kete na 74%, whereas the hydrogen is hydrogen is 74% and the helium is 24% and 2% rest रहिला जो सब गैस रहिला particles रहिला ये सब जहाँ तंकर थिबो. Okay, and hydrogen undergoes nuclear fusion to form helium. Helium टा केमिति आसे सडन जदि हाइड्रोजन एते परसेंट अछि तालो सबुति कथा हाइड्रोजन रहिबा कथा ना तार एटमॉस्फेयर रे हीलियम कोड आसिला जेते बेले हाइड्रोजन अंडरगोज द फ्यूजन प्रोसेस सेते बेले हाइड्रोजन नु फॉर्म हुए हीलियम रिलीज कोन करे ना इमेंस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट हाइड्रोजन रु कोन हुए हीलियम हुए फ्यूजन रे and release कौन करे ना lot of energy in the form of light and the heat in the form of light and heat. Okay, next देखो so sun रो सराउंडिंग रे कौन कौन तार लेयर दे कि तार भीतर पूरा कोर जोन पर्यंत केतेटा लेयर अच्छी जेमति कि रेडिएटिव जोन अच्छी प्रोमिनेंस अच्छी देन कन्वेक्शन जोन अच्छी कोरोना टा बहुत टाइम पचारे एग्जाम रे फोटोस्फियर सनस्पॉट एंड क्रोमोस्फियर एंड द कोरोनल होल कोठी कोठी अच्छी त एगुडा टिके मन रखि देथिबो बिकॉज़ कोरोना टा एग्जाम रे पक्काए मस्ट बट ए सबुरा ऊपर टिके आईडिया रखिथा. ओके, नेक्स्ट देखिबा which of the following is the richest source of vitamin C. vitamin C जेते बेले आसिला हमर समस्तिंक माइंड रे गोटे आसी जाए कि vitamin C आसिला माने कोन ना richest इन कोथरे थिबो ना साइट्रस फूड जेते सब थिबो सेथिरे हमर vitamin C थिबो. ओके, एटा ऑप्शन आसी जेबो राइट. गोटे मिनिट कौन आसीबो साइट्रस फ्रूट्स दैट मीन्स कौन ऑरेंज तो अच्छी तो आखि कान बंद करके हमें कौन ऑरेंज मार देबा बट गाइस एठी कौन देखिछि देखंतु ना रिचेस्ट सोर्स सबुठू एते इजी क्वेश्चन तम आगे तो पकई दबनी ना कि एते रिचेस्ट आपन को ऑप्शन जदी थांदा लेमन लेमन थिबो ऑरेंज थिबो देन आपनकर अलगा ऑप्शन थिबो कौन राइट आंसर मारिबे सबुठू अधिक रिचेस्ट होची गाइस गुआवा. ओके, गुआवा होची सबुठू अधिक रिचेस्ट सोर्स ऑफ कोन विटामिन सी. ओके गाइस केते रहउची ना ऑलमोस्ट 200 रु 300 ऑलमोस्ट 200 रु 300 ऑफ विटामिन सी. ओके, 200 to 300 per 100 ग्राम ना अपन कंफ्यूज देबे कि केते 200 to 300 mg for 100 ग्राम रे हमर केते रहउची ना गुआवा रहउची. सो दिस आर द कोन फूड हाईएस्ट इन विटामिन सी. फर्स्ट देखंतु रहउची कोन ना गुआवा रहउची सेकंड रे रहउची हमर कोन ना कीवी फ्रूट रहउची देन थर्ड रे बेल पेपर फोर रे स्ट्रॉबेरीज देन आछी ऑरेंज देन पपाया ए अकॉर्डिंग टिके मन रखि दबो. ठीक अछि, मोस्टली जदि देखिया को मिले साइट्रस फूड रे हमरा विटामिन सी मिले बट साइट्रस फूड्स आर ऑलवेज नॉट अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which one of the following is not correctly matched. Which one of the following is not correctly matched? Tuberculosis, lungs disease, filaria, lymph कौन अच्छी filaria, lymph nodes या फिर गोटे मिनिट यस देन अच्छी encephalitis,
हार्ट डिजीज और लिकोमिया ब्लड सेल्स लिकोमिया टा कौन होची लिकोमिया टा हमर ब्लड सेल सो इटा तो करेक्टली मैच हेची ओके ट्यूबरकुलोसिस एटा तो हमर लंग्स डिजीज टा एटा भी हमर कोन राइटली क्लिक हेची कि नहीं देन फिलेरिया फिलेरिया भी हमर फाइलेरिया जोटा कह जाए सेटा भी हमर कोन ना लिम्फ नोड्स सो फाइलेरिया टा कोन रहउची एटा भी करेक्ट अछि सो ऑड एंड आउट कोटा रहउची ना हार्ट सहित हमर एन्सेफेलाइटिस जो डिजीज ता ता सहित किछि रिलेशन ही नाही सो ऑड एंड आउट कोटा हबो ठीक अछि एन्सेफेलाइटिस हबो एंड एन्सेफेलाइटिस कोन ना एटा गोटे डिजीज जोटा कि डायरेक्ट अफेक्ट करे काहे को ना ब्रेन को अफेक्ट करे सो ब्रेन जदी थांता ताले राइट आंसर हेई थांता जोटा गोटे वायरल डिजीज लाइक बहुत सारे इन्फेक्शन एंड ऑटो इम्यून फंक्शन को आमर कोन ब्लॉक करी दिए सो एई केस रे कोन हुए ना हमर एन्सेफेलाइटिस डिजीज हुए जोटा कि रिलेट विथ द ब्रेन नॉट विथ द हार्ट ओके गाइस एंड देयर आर सम डिजीजेस जोटा कि अफेक्ट बॉडी फैट करे जेमति कि आर्थराइटिस कोन ना जॉइंट्स को अफेक्ट करे एज्मा हमर सॉरी ब्रोकियल मसल्स को करे हमर कैटरैक्ट आईज को अफेक्ट करे डायबिटीज पैनक्रियास को अफेक्ट करे डायप्थेरिया थ्रोट को द एस्मा द सॉरी एक्जिमा स्किन को द ग्लाउकोमा आईज को गोइट्री थायराइड ग्लैंड को एंड द जॉन्डिस लिवर को एंड द ल्यूकेमिया ब्लड को तो ये सब किछि किछि डिजीज अच्छी एंड तुम मैंने आउ किछि भी कलेक्ट करिके मन रखि पारिबो बॉडी रो को पार्ट को डिजीज अफेक्ट करूछि बेसी ओके नेक्स्ट देखो brass gets discolored in air brass gets discolored in air because of the presence of which of the following gases in air like guys हमर जते बेले देखिथिबो brass ठीक अछि हमर जो कहउछ कोन तंबार पात्र ढाल हैला ग्लास हैला हम जोरा कि पर्सनली यूज करूचे समटाइम्स देखो रखी देला परे सेटा डिस्कलर्ड हे जाय ता ऊपर गोटे ब्लू ब्लू कलर रो कोन लेयर आसी जाय थाए सफा कला परे सेटा ऑटोमेटिकली ब्लैक ब्लैक देखा जाय पुनी किछि दिन यूज कला परे से ऑटोमेटिक नॉर्मल हे जिवो बट सेटा पुनी आ किछि दिन परे ऑटोमेटिक पुनी सेमथि हे जिवो बट एटा काहे की हुए ओके गाइस सेटा काहे की हुए बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंट ऑफ व्हाट इन द एयर को oxygen, hydrogen sulfide, carbon dioxide or nitrogen due to what? Due to the presence of hydrogen sulfide in the air. This is kona the correct option. Hydrogen sulfide react with copper in brass. Okay. ब्रास रे जे कोनोसी कॉपर हमर कंटेन करूची ना त कॉपर सते तेले हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करूची सेते बेले कोन होउची ना फॉर्मिंग कॉपर सल्फाइड कोन करूची ना कॉपर सल्फाइड करूची जोटा कि कोन करूची ना इट विल लीड टू ब्लैक और ग्रीनिश डिकलरेशन केमिति होउची देखंतु दिस इज द इमेज ओके हमर कोन एक्चुअल कलर रु डिकलरेशन होउची ना this is why brass objects especially in polluted areas okay next देखिबा which of the following is used in pencil tell me which of the following amar कोटा यूज है पेंसिल तयारी करिबारे is that graphite silicon charcoal or phosphorus and silicon odd one out आपण मान को charcoal या फिर graphite भीतर में भी डाउट आसी थई पारे so right option कोटा हबो ना this is graphite a form of carbon कोन this is a form of carbon is used in pencil because of its softness, smooth texture and ability to leave marks on paper. Okay, ability to leave marks on paper. It is what? It is mixed with clay. कहाँ सहित ना एटा clay सहित मिसिची. The lead in the pencil is actually graphite mixed with the clay. Then जान की use हे पारुची. Otherwise only graphite ही पारी न थांदा. Okay. नेक्स्ट देखिबा प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स
production of chlorofluorocarbons gas which is proposed to be banned in India is used in which of the following domestic products. गोटे क्वेश्चन आपनकर कोन ना दीटा आंसर दे देछि कोन देछि ना ऑलरेडी हमर प्रपोज हे सारी छी कोन इंडिया रे एटा बैन करबा पई जोटा कि कोउथरे मोस्टली यूज करा जाय तार रिप्लेसमेंट देले ही एटा कोन बैन हे परिबो without giving any replacement of any object or anything. We cannot replace anyone, okay, or anything. So options कौन टेलीविजन रेफ्रिजरेटर ट्यूबलाइट कुकिंग गैस कौन आमर हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन आमर मेनली रेफ्रिजरेटर ठंडा रहिबारे यूज करंती ना कोथिरे ठंडा रखिबारे and older refrigerators used chlorofluorocarbons as refrigerants in cooling system. But एबे कौन होउची ना देटा harmful effect होउची on the ozone layer. That's why chlorofluorocarbons have been phased out and replaced with eco-friendly कहा सहित ना refrigerants like hydrofluorocarbons कहा सहित hydrofluorocarbons and the hydrocarbons यार replacement कौन आसीची ना chlorofluorocarbons रो this is hydrofluorocarbons and the hydrocarbons. Okay guys, clear? Next देखो so due to various आमर देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फल आमर कोन ओजोन लेयर बहुत इफेक्ट पकोची क्लोरोफ्लोरोकार्बन जोथि पे हम ओजोन लेयर होल भी होची सो बहुत सारा डिस्कशन बहुत सारा कोन डिस्कशन पर गोटे डिसीजन से माने नै थिबे ना जो माने साइंटिस्ट माने अछंती तो डिसीजन नेबा फल रे कोन हेची ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन बदल रे काहा को हम यूज करिबा ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एज ए कूलिंग रेफ्रिजरेंट्स और कूलिंग एजेंट ओके नेक्स्ट देखिबा balloons are filled with what को गैस रे हमर balloons fill होची is this nitrogen helium oxygen or argon एटा भी हमर एग्जाम रे पढिथिला so easy for that ओके कोन हबो ना हमर हीलियम हबो केमिति हीलियम हबो बिकॉज़ हीलियम इज अ कोन लाइट बहुत लाइट वेट एंड दिस इज ए नॉन फ्लेमेबल एंड ए इनर्ट गैस वी नो ओके जेहेतु एटा गोटे नॉन फ्लेमेबल गैस एंड एटा बहुत लाइट वेट सेथि पे हमर कोन बलून डा ऊपर को उड़ी उड़ी जाय एंड किछि रिस्क भी तार न थाए ठीक अछि बिकॉज़ ऑफ द लाइट इन नेचर एंड दिस इज नॉन फ्लेमेबल एंड गाइस ताको हमें कोन कहि परिबा दिस इनर्ट गैस ओके इनर्ट गैस सब मन पकई था एग्जाम रे मोस्ट इनर्ट गैस ऊपर क्वेश्चन आसुची ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स सबु एसिड रे प्राय से एलिमेंट को हमें देखिबा को पाए तो से एलिमेंट टा कोन हबो इज दैट हाइड्रोजन कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन कोन हबो ऑब्वियसली कोटा हबो हाइड्रोजन हबो ओके हाइड्रोजन हबो बिकॉज़ हाइड्रोजन होची कोन ना ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन हम जानि छे जोटा कि H+ आयन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज तार कोन निजर ओन एसिडिक प्रॉपर्टीज थिबा फल रे हमें जे कोन से एलिमेंट ताकू मिसेइले से ऑलरेडी हमकु मिसी की गोटे प्रॉपर न्यू एलिमेंट प्रोवाइड करि पारुची राइट सो फॉर एग्जांपल हमें केमिति नै परिबा ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl and a कौन नहीं sulfuric acid that is H2SO4 okay nitric acid HNO3 okay ए सबुतरे कौन हमरा हाइड्रोजन कंटेन रहउची तो सेम हाउ हमें कौन कहि परिबा ना हाइड्रोजन सबु सहित लाइक सबु एलिमेंट सहित मिसी की हमको न्यू कंपाउंड देई पारुची सो दिस इज एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स okay next non-stick cooking utensils are coated with हमें जो यूज करूछे this is a picture non-stick जोटा okay
से जो ब्लैक कलर कोटिंग थाए एबे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर भी आसीगलानी तो स्पेशली आमर कौन स्टार्टिंग होता ब्लैक कलर तो से जो ब्लैक कलर कोटिंग होता सेटा आमर कौन से जिनसटा कौन कौन तैयारी ऑप्शंस आ देखो दिस इज टेफ्लॉन पीवीसी ब्लैक पेंट और पॉलीस्टरीन ब्लैक पेंट तो केबे भी नुह बिकॉज आम जी कि हिट देकी कुकिंग करुचे जदि ब्लैक पेंट होता सेटा तो पूरा मेल्ट हो जाता सो ब्लैक पेंट कोड वन आउट कर कोटा हम ना राइट आंसर हम आमर कौन टेफ्लॉन जोटा कि आमर कोथरे ना नॉन स्टिक कुकिंग रे यूज करूचे क्या टेफ्लॉन को एंड टेफ्लॉन रे कौन अच्छी ना दिस इज पॉलीइट्रा फ्लोरोइथाइलिन कौन अच्छी ना पॉलीटेट्रा इथाइलिन ओके ताको कौन कह जाउची ना पीटीएफई very important this one okay because it has high heat resistance या पाखे अछि का पाखे अछि ना PTFE पाखे and this is also low friction preventing what food from sticking that's why we use Teflon instead of all other elements next देखिबा which is laughing gas which is a laughing gas भाबरे आमे को गैस को यूज करूचे पिला माने laughing gas भाबरे आमे कहा को ना नाइट्रस ऑक्साइड को यूज करूचे केमिति करूचे ना नाइट्रो काहे की करूचे सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड जोडा कोन ना N2O दिस इज commonly known as laughing gas because it includes what na euphoria and mild hallucinations कौन करे ना आम माइंड भितर गोटे माइल्ड हालुसिनेशन क्रिएट करे जहा फल कि आम कौन ना जब इनहेल करुचे हालुसिनेशन क्रिएट करुची तो आमको ऑटोमेटिक हस लगुच ठीक अच्छे एंड इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एंड कौन डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी रे हमर यूज हुए कोथि यूज हुए एटा एनेस्थेटिक डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी रे ताको यूज करूछे ओके एंड आउ गोटे मन रखि थिबो एटा हम यूज करछु कोथि ना एज ए प्रोपिलेंट इन व्हिप्ड क्रीम ओके आमे तले व्हिप्ड क्रीम बनौछे तार गोटे कोन कैनिस्टर्स भाबे ताको यूज करछे व्हिप्ड क्रीम कैनिस्टर्स बने बारे हम ताको यूज करूछे यूज्ड एज ए व्हिप्ड क्रीम कैनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लैबोरेटरी रे केमिति साको प्रिपेयर करा जाउछि ना फर्स्ट देला अमोनियम नाइट्रेट को तले हीट दिया जाउछि देन से हमर आसिकी वार्म वाटर सहित मिसुछि देन जो गैस ता बाहर ताको हमें कलेक्ट करूछे कोन होउछे ना डी नाइट्रोजन ऑक्साइड को ओके जते बेले अमोनियम नाइट्रेट को हीट दौचे से आसुची वाटर सहित जेते हीट देला परे अमोनियम रो हीट मिसला परे अमोनियम नाइट्रेट रो देन ए वाटर जेते बेले बॉयल होची बबल होची वार्म वाटर टा सेतरे जो गैस हमें कलेक्ट करूचे ताको हमें कहूचे कोन ना दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड मिक्सिंग विथ का सहित ना वाटर सहित मिक्स हेके हमको मिलुची ओके नेक्स्ट द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड of the filament of a electric bulb is made up of what the options are tungsten nichrome graphite iron graphite तो नुह कारण ग्राफाइट तो तार एति की क्षमता नाही इलेक्ट्रिक बल्ब रो करंट को कोन कैरी करि परिबो सो कोटा हबो ना टंगस्टन विल बी द राइट आंसर because it has a high melting point because it has a what na it has a high melting point
it has a high melting point. केते रहउची almost 3422 degree centigrade. And also a low vapor pressure also carries a low vapor pressure. VP लिखि देछि जानिबो vapor pressure, which prevents what? Which prevents it from melting or evaporating at a high temperature. It also a good electrical conductivity. It is a good electrical, it has good electrical conductivity nature. Okay, that's why we use tungsten. So कोठी हमर को पार्टटा tungsten filament देखो जो जगहटा हमर जळे. So this is the portion of tungsten. Next, diamond is an allotropic form of. Tell me, diamond is an allotropic form of what? Is that, wait a minute, is that germanium, is that carbon, is that silicon, or is that sulfur? Diamond is an allotropic form of what? Ko kahar hobo na ma'am, this is carbon hobo, because we all knows that what diamond gote kono ना कार्बन रो क्रिस्टालाइन एलोट्रोप, कहार ना कार्बन रो क्रिस्टालाइन एलोट्रोप हैला हमरो डायमंड. ठीक अछि. एंड हमरो आउ कोन अछि कार्बन रो, जेमति कि ग्राफाइट हैला, ग्राफिन हैला, फुलेरिन हैला, एंड कार्बन रो नैनो ट्यूब्स जतिक सबु से सबु कहार ना दीज आर आल्सो द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. कोन ग्राफाइट, ग्राफिन, fluorine, sorry, fullerene. Okay, graphite, graphene, fullerene, and carbon nanotubes. These are all the what? Allotrope of carbon. Sorry, not diamond. This is carbon. Okay, including the diamond. Next question देखो. So जो Buckminster देखो तो Buckminster fullerene जो एग्जाम रे पकेइला fullerene अच्छी, that means आपण माने कोन this is the allotrope of carbon बोली कहिबे. ठीक अछि. Next question. Permanent hardness of water may be removed by the addition of. आमर वाटर रे जो हार्डनेस थाए तो परमानेंटली रिमूव हो जिवो आमे जदी कोन यूज करिबा वाटर रे. द ऑप्शंस आर सोडियम कार्बोनेट, एलम, और द पोटेशियम परमैंगनेट, और द लाइम. कोन गले ना दिस इज सोडियम कार्बोनेट आमे जदी यूज करूछ. केमिति ना सोडियम कार्बोनेट को हम आउ कोन बोली जानिचे ना वॉशिंग सोडा बोली जानिचे, Na2CO3, राइट, वॉशिंग सोडा. ओके, एंड एटा रिमूव करे कोन ना परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बाय प्रेसिपिटेटिंग कहाकू ना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस as insoluble कोन कार्बोनेट्स कहा सहित ना वाटर सहित जते बेले कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस मिसुची with the calcium plus कौन होची ना हमरा मैग्नीशियम आयन. ओके, नेक्स्ट देखिबा हाउ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. कौन होची ना आयरन रहूची, मैग्नीशियम रहूची एंड कैल्शियम रहूची, जोटा कि नॉर्मली आमे जते जदी गरम करिबा, ओके, जदी नॉर्मली आमे कोन बॉईल करिबा ताहाले हार्डनेसटा जीवनी. जदी आमे सेथिरे कोन ना Na2CO3 ऐड करूछे सेटा हमर कोन करिवो ना गोटे प्रेसिपिटर भाबरे यूज हबो, जोटा कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को ता सहित बाइंड करी कि बाहर कर दबो, ताकू डिसॉल्व करि दबो. ओके गाइस, नेक्स्ट देखिबा
soda water contains what? Tell me, soda water contains what? Obviously समस्त जानचे कौन हम कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस एसिड. आमर कौन हम राइट आंसर ना कार्बन डाइऑक्साइड हम. हाउ? सोडा वाटर इज द वाटर इन कौन इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर. गोटे प्रेशर देकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजॉल्व करके रखा जाए थाए. आपण मैंने देखिए कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल है जिते सांगे सांगे कैपटा खोलिए बट बहुत जोरे साउंड हुए ना पूरा छटकी पड़े तो कौन डिजल्व होता है गोटे प्रेसर मिसई रखा जाए जिते उपरकू से कौन बाहर ही ट्राए होता है टिके टाइम एमती झिकी देकी जिते आप उपरकू खोलीदेवे से ऑटोमेटिक सब बाहर की उपरकू पड़ेब बिकज ऑफ व्हाट कारण से प्रेसर देकी सप्रेस करके रखा जाए. ठीक अच्छे से व्हेन वी ओपन द कौन बॉटल ओपन करूचे सो प्रेशर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ कौन कार्बन डाइऑक्साइड टू एस्केप द फॉर्म ऑफ बबल्स. को फॉर्म रे ना बबल्स फॉर्म रे. ओके नेक्स्ट देखिबा. सो दिस इज ए सिंपल आमर जमी जानवाई कि केमती डिजल्व होती. सपोज इफ यू नो दैट सोडा कंटेन्स कार्बनिक एसिड व्हिच डिकम्पोजेस टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, what will happen to the mass of a bottle of soda if you leave it open on the table. जदि ओपन करके रखा दिया जाए ताहले कौन हबो जदि कार्बन डाइऑक्साइड बॉटल रे अछि. ओके देन कौन होची ना कार्बनिक एसिड जेते बेले as a reactant then water plus carbon dioxide होची प्रोडक्ट. कार्बनिक एसिड मिसे के रखा गला मास कार्बनिक एसिड हमर केते हबो ना मास वाटर प्लस मास कार्बन डाइऑक्साइड. ओके सो मास कौन हबो डिक्रीज हबो. So law of conservation of mass कौन कहूची ना mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction. So mass reactants is equal to mass product बाहरुची. जदि आम किसी टाइम पे बॉटल टाको सेक करके छाड़ी दउचे देन कौन होची ऑटोमेटिक सब बाहरी जाउची. जदि आम सेक करूने ताहले किछि होउनी neither create nor destroy. बुझिला. नेक्स्ट the scientist who discovered that the earth revolves around the sun was Newton, Dalton, Copernicus or Einstein. किए कहिथिले कि हमर अर्थ टा सन अराउंड रे कोन रिवॉल्व करूछि बोली. किए दिस इज निकोलस कॉपर्निकस. केबे करिथिले ना 1473 रु 1543. ओके केबे करिथिले ना 14 सॉरी आपण माने मन रखंतु कि इन बिटवीन दैट. ओके एग्जैक्ट डेट आई डोंट नो अबाउट दैट बट स्टिल आपनकर एग्जाम रे इंपोर्टेंट आसीबो कोन साइंटिस्ट कर नेम. ओके प्रपोज द कोन ना हमर हेलियोसेंट्रिक मॉडल रे कोन एक्सप्लेन हेतिला ना व्हिच स्टेट्स दैट द अर्थ and the other planets are revolve around the sun. से स्टेटमेंट टा कौन होची से थ्योरी टा कौन कह जाउची ना दिस इज हेलियोसेंट्रिक मॉडल. that states what na including earth or other planets, the earth and other planets revolve around the sun. Okay next देखो. सो गाइस सबुठू जते बेले हमर कोन सन रहिछि तार चारिपटे अर्थ जते बेले हमर कोन रोटेट करूछि रिवॉल्व करूछि देन कोन होछि सबुठू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमर कोन कहै जाउछि ना पेरिएप्सिस जोटा कि 3rd of January रे आसुछि. सबुठू कोन से टाइम रे अर्थ सबुठू क्लोजेस्ट रहउछि सन रो एंड सबुठू लॉन्गेस्ट कोठ रहउछि ना ताकू कहै जाउछि अपोएप्सिस जोटा केबे 3rd of July. गोटे अछि 3rd of July रे सबुठू लॉन्गेस्ट रहउछि
एंड सबुठू शॉर्टेस्ट केबे रहउची ना 3rd ऑफ जून रे एमिति करिक मन रख देथिबे सो 3rd ऑफ जून पाखा पाखी जदी किछि डेट आसिला सपोज 4 5 ए भीतर आसिला या फिर जुलाई रे जदी 3rd 4 5 एमिति किछि आसिला तो 3rd जून को 3rd जुलाई आपण मन रखिथांत सॉरी जून लिखिछि या जनवरी जून नहीं 3rd ऑफ जनवरी मन रखंतु ठीक अछि 3rd ऑफ जनवरी तो जनवरी पाखे जदि किछि आसिला मन रखिबे कोन एटा सबुठू पाखे रे आ जदि दूर रे अछि जानिबे कि जुलाई रे जदि किछि डेट आसिला ताको आपण मन रखि कि एग्जाम में लिखिबे जुलाई ओके जोडा कि पाख रे थिले कोन हबो ना आपोरु मन रखिबे किछि भी वर्ड देई थाई पारे तो आपो एप्सिस एंड पेरी रु मन रखिबे कोन देखंतु ए फॉर कोन आपनार बट एठी कोन ऑपोजिट मन रखि देबे कारण आपनार पर एडा सब कोन पर माने पेरियासिस पर जी दूर रे थाए एंड पाखरे जी से आपनारे लोक थाए दैट मीन्स आपो एप्सिस बट एठी कोन होउची नाटा को अल्टरनेट कर देबे कारण एटा हमर कोन अर्थ रे होउची कि जते सोलर सिस्टम को हम काउंट करूचे सेते बेले तो होउनी ना तो सन आ अर्थ जते कॉम्बिनेशन करा गला तो आपनारे पर हे जाय पर आपनारे हे जाय मन रहिला सो परटा कोन हबो ना पाखरे रहिबो आपनार दूर रे रहिबे ओके नेक्स्ट for which of the following disciplines is Nobel Prize awarded कोथि पय हमरा नोबेल प्राइज दिया जाय फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पय फिजियोलॉजी और मेडिसिन पय लिटरेचर पीस एंड इकोनॉमिक्स पय या फिर all of this पय yes all of the above will go कोथि पय ना हमरा सब ऑप्शन गुडा राइट हबो ओके सो फर्स्ट हमरा किए पाइथिले ओडिसा रो ना रविंद्रनाथ टागोर पाइथिले ओके नॉट ओडिसा रो बट फर्स्ट इंडिया रो के पाइथिले ना रविंद्रनाथ टागोर हु ओन द नोबेल प्राइज ओके हु ओन द नोबेल प्राइज इन द ईयर yes in literature 1913 रे in literature 1913 okay next question देखो the number of chromosomes in human body the number of chromosomes in human body is केतेटा chromosomes the total 23 pair we know okay we know 23 pairs of chromosomes wait a minute yes so the number of chromosomes in human body is 23 pairs that means केते रहिबो ना 46 pair रहिबो ना नहीं केते रहिबो 46 pair रहिबो so according to this have a look so total 2n proposed रहउची जोटा कि n is equal to 23 and दीटा पेयर रहउची जोटा कि सॉरी 23 पेयर्स रहउची एंड गोटा को दीटा सो 46 पेयर्स रे जोतरे कि 22 पेयर्स रहउचंदी कोन ऑफ क्रोमोसोम जोटा कि ऑटोसोम्स हम ताको कहउचे एंड वन पेयर क्रोमोसोम जोटा कि कोन सेक्स क्रोमोसोम बोली ताको कहआ जाउ जोटा को एलोसोम्स बोली कहआ जाउची एंड से वन पेयर क्रोमोसोम्स रे वन इज XY अनदर इज XX जोदी x सहित x हैला देन कोन ना गोटे झियो जन्म होउची जेते बेले x सहित y कॉम्बिनेशन हैला सेते बेले कोन ना गोटे पुओ जन्म होउची सो XY क्रोमोसोम कहा पाखे ना गोटे मेल पर्सन पाखे थाए बट फीमेल पर्सन इज ऑलवेज कैरी द XX क्रोमोसोम्स सो गोटे पुओ होउची या फिर जो झियो होउची दैट्स डिपेंड अपॉन द मेल क्रोमोसोम्स ओके नेक्स्ट देखिबा philology is the what like philology is the study of what study of bones study of muscles study of architecture or science of languages tell me guys study of bones कोन ताकू osteology कहा जाय study of bones कोन ताकू osteology बोली कहा जाय okay it is a branch of कोन branch of anatomy that deals with the structure function and diseases of bones मन रहिबो osteology and study of muscles guys कोन ना myology what study of study of muscles is myology and it involves kona the study of
स्ट्रक्चर हैला फंक्शन हैला एंड डिजीज ऑफ कोन हैला मसल मसल ऊपर जहा हैला स्टडीज हमें करूचे ताको हमें कोथरे करूचे ना मायोलॉजी रे स्टडीज करूचे एंड स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर कोन ना एटा फॉल्स अंडर द आर्किटेक्चरल साइंस अंडर रे बट रेस्ट रहिला कोन ना साइंस ऑफ लैंग्वेज ताको हमें कोन कहूचे ना फिलोलॉजी ओके साइंस ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज व्हाट ना फिलोलॉजी ओके स्टडी ऑफ लैंग्वेज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड इट्स कोन केमिति हमें ताको लिटरेरी एस्पेक्ट रे यूज करूचे दिस ऑल आर अंडर साइंस ऑफ लैंग्वेजेस ओके आपण माने देखिथिबे फिलोलॉजिस्ट ओके फिलोलॉजिस्ट एनालाइज द एंशिएंट टेक्स्ट्स ग्रामर सपोज गोटे केमिति अलग डिफरेंट लैंग्वेज रे आगो काल जोटा यूज हुए एंशिएंट एजेस रे यूज करथिले शिलालेख जोटी हुए से माने फिलोलॉजिस्ट माने कोन ना से माने ही पढंती डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जोटी भी लिखा हितबो से माने सेदरु पढी परिबे ओके से माने बेसिकली कोठी ना जो माने हिस्टोरोलॉजी अछंती तो तांको अंडर रे माने काम करंती ओके नेक्स्ट सो फर्स्ट बर्थ ऑफ लैंग्वेज गाइस केबे हेथिला दिस इज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट आपण माने टिके स्क्रीनशॉट नै कि पढिबे आपन को बहुत ही इंटरेस्टिंग लागिबो ठीक अछि नेक्स्ट व्हिच आईआईटी हैज डेवलप्ड हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन that is what na HTC technology for solid waste management IIT कानपुर मद्रास खड़गपुर और दिल्ली टेल मी किए हबो ना हमर आईआईटी कोन हबो ना खड़गपुर हबो ओके व्हाट इज एचटीसी ना दिस इज हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन इथे कोन हुए ना इट कन्वर्ट्स कोन वेट वेस्ट तो वेट वेस्ट पार्टिकल्स हमर अछि देखि चंदी अलिया गाडी जते बेले आसे कोंती कोन ए पटे ड्राई वाला डस्टबिन एटा होला वेस्ट डस्टबिन तो ड्राइड वाला रे पकाओ सब सुखा अलिया जिंस ओदा अलिया जिंस जते सब रहला परिबा चोपा हैला अलगा जिंस हैला सब कोन कहबा को तुम पड़थुए कि ओदा जगह रे पकाओ बोली सो ए वेट वेस्ट ओडा को से माने कोन कन्वर्ट करूची इनटू कोन बायोकार मैन्योर एंड द बायोफिल्स कोथरे ना बायोकार ओके मैन्योर एंड बायोफ्यूल्स रे कन्वर्ट करूछंती को प्रोसेस रे ना इन द प्रोसेस ऑफ एचटीसी ओके एंड दिस विल हेल्प जोटा कि हेल्प दिस विल नो दैट ऑलरेडी हमर सरलानी सो दिस हेल्प्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग कोन लैंडफिल वेस्ट ऑलरेडी हमर जदी लैंडटा फिल हो जाउची कोथरे वेस्ट प्रोडक्ट्स रे जदि हमें ताको अलगा पर्सपेक्टिव रे यूज करि पारुछे तो एटा गोटे बेटर इनिशिएटिव जोटा कि ऑलरेडी किए नै छी आईआईटी खड़गपुर नै छी मने रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो inert gases were discovered by so guys when were the inert gases discovered हेथिला अच्छा discovered by not when but discovered by कहार ना रामसे को द्वारा हेथिला मन रखिबो कहा द्वारा ना रामसे ता फुल नेम कोन विलियम रामसे ओके कोथिरो ना स्कॉटलैंड रो केमिस्ट्री मन रखिबो स्कॉटिश केमिस्ट्री जोटा कि आपन दरकार नै स्टिल जस्ट फॉर योर नॉलेज कोन रखिबे ना विलियम रामसे डिस्कवर करथले फर्स्ट इनर्ट गैस केबे इन 19th सेंचुरी 19th सेंचुरी रे ठीक अछि नेक्स्ट देखो सो हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन एतिकी थिला बट यूनोक्टियम भी 2002 रे हमर ऑलरेडी ओटे आसी जाई छी इनर्ट गैस बाबरे एते ताकू यूज करा हेनी बट एटा बस डिस्कवर हेसी एज अ कोन यूनोक्टियम इज अ इनर्ट गैस ताको मन रखते दी लेटेस्ट कोटा पडिबो एग्जाम रे कि एज अ इनर्ट गैस कोटा डिस्कवर हेची देन यूनोक्टियम विल बी द वन ओके एंड एथि पई नोबेल प्राइज हमर किए पाइचंती ना विलियम रामसे कोन ए इनर्ट गैस को डेवलप करी केबे पाइथिले नोबेल प्राइज इन द ईयर ऑफ 1904 इन द ईयर ऑफ 1904 ओके देखो डिफरेंट साइंटिस्ट माने भी तांको हेल्प करसंदी बट सबु थिरे प्राय कोन मेन रोल प्ले करचंदी किए ना विलियम रामसे ओके एंड आल्सो गाइस ये किए करथिले ना डिस्कवर्ड हीलियम जोटा हम हीलियम नियन क्रिप्टन जेनन भी करथिले बट आल्सो तांकर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन अछि टुवर्ड्स व्हाट टू द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल
सो पीरियोडिक टेबल ऊपर भी जदी एग्जाम रे क्वेश्चन आसिला किए ताकू डिस्कवर करथिले जदी इनट गैस ऊपर पचारि परला देन पीरियोडिक टेबल ऊपर पचारिबो बोली किछि गोटे कोन डाउट हमर नाही सो किए करथिले ना ये भी हमर विलियम नामसे करथिले मन रहिबो नेक्स्ट देखिबा name of the world's fastest bullet train that is tested by Japan recently जापान रे वर्ल्ड रो फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन करा जाइथिला तो तार ना कोन अछि को कोन हबो तार ना होची मैग्लेव वर्ल्ड रो फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन कोन होची ना मैग्लेव तार ना फुल फॉर्म कोन होची ना मैग्नेटिक लेविटेशन मैग फॉर magnetic and lev for कोन levitation sorry levitation this one E okay levitation okay guys and which can reach a speed over kete 600 kilometer per hour ओके कहा द्वारा हिदिला ना जापान द्वारा मन रहिबो को कंपनी सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी दैट इज जेआर सेंट्रल बोली ताकू कहा जाउची ओके सो गाइस दिस इज फर्स्ट हमर कोन ना फर्स्ट इंडिया रे बुलेट ट्रेन स्टार्ट हेबाकू जाउ जोटा कि तापरे चली छि प्लानिंग एंड ऑल जोटा कि ऑलमोस्ट 2030 रु 33 भीतर हमर कोन मुंबई रु अहमदाबाद भीतर लाइक अहमदाबाद रु स्टार्ट हे कि मुंबई भीतर हमर कोन एटा कंप्लीट हेबाकू जाउ छि साबरमती टू द मुंबई सो बहुत शीघ्र एटा भाकू जाउ छि तो या पर जदी किछि क्वेश्चन आसिला कि फर्स्ट कोठु को जान चलीबार प्लान अछि देन प्लीज मन रखिबो मुंबई टू अहमदाबाद ओके नेक्स्ट देखो Who was the first Indian scientist to win a Nobel Prize? Who was the first Indian scientist पचारिछि ओके पर्सन पचारिले रविंद्रनाथ टैगोर सो किए रहउछंदी को मते देखंतु ऑप्शन रे दीटा याकू तो मु अमर्त्य सेन एंड द हरगोविंद खोराना को मु कोन ऑर्डर आउट करिछि वर्तमान ठीक अछि बट फर्स्ट पर्सन के देखंतु देबो आपन को आइदर सीवी रमन नहले सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भीतर कंफ्यूज होबो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एथि पय कंफ्यूज होबो कारण सीवी रमन कर फुल नेम ही होछि कोन ना सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन ओके सेहिथिरे आपन माने कंफ्यूज हेबेनी कारण सीवी रमन जो माने फुल फॉर्म जानि नथिबे से माने जदि चंद्रशेखर सुनिथिबे ताले चंद्रशेखर को मे बी राइट आंसर दे देबे ठीक अछि वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन नोबेल प्राइजेस इन कोथिरे कहिथिले इन फिजिक्स रे को द ईयर रे 1930 रे इन फिजिक्स इन 1930 रे पाइथिले फॉर हिज डिस्कवरी कोन ना रमन इफेक्ट मन रख तांकर ना रे से देइथिले रमन इफेक्ट ओके एंड रमन इफेक्ट एक्सप्लेन कौन करूची ना द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड चेंजेस इन इट्स वेवलेंथ व्हेन इट पासेस थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम जते बेले कौन सी ट्रांसपेरेंट मीडियम रे गोटे लाइट पास करूची तो लाइट र स्कैटरिंग केमिति होची तार वेवलेंथ चेंज केमिति करूची एटा हमर देखौची कोथरे ना रमन इफेक्ट रे याको डिस्कवर करिकी फर्स्ट नोबेल प्राइज पाइथिले कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन गाइस क्लियर सो सीवी रमन द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज एंड तांकर डेथ एनिवर्सरी केबे रहउची ना दिस इज 21 नवंबर मन रखिता नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन टिके तेढ़ा मेढ़ा ही रहउची बिकॉज कलेक्ट करिथिली तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो एमती पेपर आनी कि लाइक प्रीवियस ईयर मीन्स बहुत एटा 16 17 टाइम रो भी क्वेश्चन आसुची सेथि पय एमती मिलिला टिके एडजस्ट कर देबे जदी पढी न होची मते कहिबे देन म आपन पाखु पीडीएफ रे क्वेश्चन पठे देबे ठीक अछि एनी हाउ आपन को तो पीडीएफ मिलुची टेलीग्राम ग्रुप आपन जॉइन हेबे टेलीग्राम ग्रुप होची गोटे मिनिट आपण माने ग्रुप रे जॉइन हे के को आराम से पाई जिवे ठीक अछि
यस जीके बाय दीप्ता मारिदेबे आपणकर आसीजिव ओके so potassium graphite and calcium graphite can be mostly used as potassium graphite and calcium graphite can be mostly used as a what as a lubricants as a moderators as a semiconductors as a superconductors को भले आम यूज करूचे potassium graphite and calcium graphite को कहतु सो लेट्स सी केमिति करूचे ना as a superconductors भाबरे हम यूज करूचे because potassium graphite and calcium graphite रहुची आर कौन ना आर intercalated graphite compounds what ना intercalated graphite compounds okay that exhibit superconducting properties at low temperature so these materials are always what na allow electrons to move without resistance कौन करिवे ना allow करिवे electrons को without resistance रे move करिया को and making them useful in semiconductors okay so किए ना potassium graphite and calcium graphite कहा को ना superconductors रे use हुअंती बुझी पारे व्हाट इज द मेन रीजन नेक्स्ट देखिबा गाइस बिफोर दैट हमर एठी क्वेश्चन जो थिला सीबी रमन लाइक कोन फर्स्ट कथा पढ़छि तो फर्स्ट ए दिटा कंफ्यूज हेबे बट अमर्त्य सेन एंड रहिले कि हरगोविंद खराना एमाने भी हमर नोबेल प्राइज पाइथिले ताको आपण ऑड वन आउट एई बेसिस रे करिवेनी कि एमाने नोबेल प्राइज पाइ नथिले ठीक अछि केमिति देखंतु अमर्त्य सेन हमर कोउथरे पाइथिले ना इकोनॉमिक्स एंड साइंस रे पाइथिले 1998 रे 1998 रे हमर को नोबेल प्राइज पाइथिले अमर्त्य सेन कोउथरे इकोनॉमिक्स साइंस रे यस लिखि देछि ओके देन हरगोविंद खोराना भी हमर केबे ना 1968 रे गाइस पाइथिले ठीक अछि 1968 रे पाइथिले कोउथरे पाइथिले ना नोबेल प्राइज इन मेडिसिन रे पाइथिले ठीक अछि जेनेटिक कोड एंड इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट भाबरे भी तांको जाना जाय फर्स्ट इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट ओके एंड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी हमर नोबेल प्राइज पाइथिले कोथरे फिजिक्स रे बट टिके लेट रे पाइथिले 1983 रे पाइथिले सो फर्स्ट हमर 1938 जेतु रहउची सो फिजिक्स पई के पाइथिले ना नोबेल प्राइज पाइथिले हमर सीवी रमन ओके एंड एंकर एथि पई फिजिक्स रे सेकंड भी हेबेनी कारण ये जस्ट नोबेल प्राइज पाइबा पूर्वरु हमर के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से यूएस रो सिटीजनशिप हमर पाई जाइथिले ठीक अछि से यूएस रो सिटीजनशिप पाई जाइथिले जेहेतु बिफोर विनिंग द अवार्ड तो तांको हमर काउंट कर दउनी एज अ कोन फर्स्ट लाइक इंडियन फर्स्ट तो नहीं बट इंडियन भाबरे ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा so this is the property of what na superconductors केमिति permanent magnet को attach करके रखुछि next देखिबा which among the following is the world's first fully synthetic plastic world रो first fully synthetic plastic भाबरे आमे काहा को यूज करूछ कोटा को ना कहिथिली fully के हबो ना bakelite हबो ओके bakelite इन्वेंट हेतिला काहा द्वारा ना invented by Leo Baekeland by Leo Baekeland केबे 1907 रे in the year 1907 was the first fully synthetic plastic and it was created by polymerizing petrol and formaldehyde कहा द्वारा ना polymerizing petrol and formaldehyde
bakelite, polymerize, sorry, not petrol, this is polymeride phenol and formaldehyde. Okay. Next देखिबा. So first केबे हेतिला December 7 1909 एटा फर्स्ट इन्वेंट हेतिला. इन्वेंटर किए होचंदी ना इन्वेंटर होचंती लियो वैकेलेंड, the first thermosetting plastic bakelite. Okay. Next, nowadays aluminium has become popular as a green metal. Which of the following properties of aluminium makes it the so called green metal? Co properties रही aluminium रे, that's why we can say that it is a green metal. कौन रहुची कुह देखंतु ऑप्शन कौन, it is a light metal resistant to corrosion, it is the replacement for wood that saves the forest and environment, it has a high rate of recycling and can be used many times. Yes, कौन हबो ना, it has a high rate of recycling and can be reused many times. It is a highly recyclable. Okay, unlike many other metals, कौन aluminium can be recycled indefinitely without losing its properties. मन रहिबो, so making it कौन one of the most sustainable materials. Next देखो. So aluminium is called the green metal because it is a very environmentally friendly metal. Recycling this material saves 95% of the energy required to produce aluminium from raw materials. मन रहिबो, aluminium is a green material. Sorry, green metal. Which among the following does provide colors to fine cut diamonds? So which of the following किए देखंतु जेते बेले हमर डायमंड रे कोन रहिबो प्रेजेंस रहिबो इम्प्यूरिटीज, देन हमर कोन हबो ना डज प्रोवाइड कलर्स ऑफ फाइन कट डायमंड. जेते हमें फाइनली कट करथुवे डायमंड को सेते बेले कलर टिके टिके चेंज आसे, टिके पेल येलो टाइप रो देखा जाय या फिर जदी डिफरेंट कलर आसिला, देन हमें कोन ना जदी गोटे कट रहिला सेठी इम्प्यूरिटीज रहउची, देन हमें कोन कहि परिबा ना एटा प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज. Okay, the color of diamond is primarily what? Now, primarily due to the presence of impurities in its crystal lattice. कोथिरे ना crystal lattice रे. And pure diamonds we all know are entirely made up of what? Carbons and are transparent. Okay. To the trace element रहिला like nitrogen रहिला, boron रहिला, hydrogen रहिला present रहिबो जदी as impurities, then they can कोन absorb the specific wavelengths. जदी किछि लाइट पडुची हमर wavelength रो लाइट रो wavelength को जदी से माने कैच करिवे ता अकॉर्डिंग कोन करिवो ना डायमंड रो कलर चेंज हबो. जेमिति कि जदी नाइट्रोजन रहिला ताहले केमिति हबो, सपोज देखो जदी नाइट्रोजन रहउची ताहले कोन हबो ना येलो और ब्राउनिश कलर आसीबो, येलो और ब्राउनिश कलर. एंड जदि हमर बोरोन रहिला ताहले हमर कोन रहिबो नाइट्रोजन रहिले येलो रहिला, बी बोरोन, बी फॉर बोरोन, बी फॉर को कलर रहिबो ना हमर ब्लू कलर आसी जिवो. एंड जदि हमर हाइड्रोजन रहिला देन कौन आसीबो डायमंड कलर मे बी पिंक और पर्पल कलर आसीबो, पिंक और पर्पल. जदि रेडिएशन एक्सपोजर अकॉर्डिंग आसीला अकॉर्डिंग टू व्हाट ना रेडिएशन एक्सपोजर देकी से डायमंड आसीला, देन को कलर हबो ना दिस विल बी द ग्रीन कलर. So this is how diamond color change हुए. Okay, next देखो.
for the production of which of the following is the Haber process used? Tell me, for the production of which of the following is the Haber process used हुए? Haber process टा guys कौन and कौन पे use हुए? ना Haber process is also known as कौन? Haber Bosch process. एटा मन रखिथिबो कौन कहै छै ना Haber process. मन रहिबो. It is used for the industrial production of what? Na ammonia. Kahaku? Ammonia ro industrial production ପାଇଁ use करा जाए by combining with the nitrogen from the air and hydrogen from the natural gas. करो nitrogen and hydrogen को नेकी ही एटा combination करा जाए under high temperature. मन रहिबो केमिति देखो suppose nitrogen plus hydrogen 3 hydrogen okay 3s2 कौन हमको दोची ना एटा दबो this will be a reversible reaction okay this will be a reversible reaction हमको कौन दोची ना ammonia दोची this is 2NH3 okay ammonia दोची मन रहिबो next देखो so nitrogen plus hydrogen जेते बेले 1:3 रेशियो रे हमें ऐड करूछे in the कोन under pressure दोउछे हीट देकी देन हमको से कोन दोउची ना लिक्विड अमोनिया फॉर्म करूछे मन रहबे रिएक्शन टा नेक्स्ट देखो which type of chemical reaction is responsible for turning the rocks red or yellowish which type of chemical reaction is responsible for turning the rocks red or yellowish किछि टाइम परे देखु जे हमें बेले हमर कोन रॉक रो कलर रेड हे जाउची या फिर येलो हे जाउची कोथि पई इमदी होउची बिकॉज़ कोथि पई कार्बोनेशन एक्सप्लॉइटेशन सॉरी एक्सफोलिएशन और हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन कोथि पई गाइस हबो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हबो ओके द रेड or yellow coloration in rocks is primarily caused by what na by the process of oxidation of iron metals कोन present in them iron metals हमर कोन पत्थर उडा करे सब थाए तो सेटा जे ऑक्सीडेशन प्रोसेस रा से तो रॉक रे कलर हमर पत्थर रे कलर टा चेंज हुए ना नहीं so when iron in the rocks react with the oxygen Fe जेते बेले हमर कोन O2 सहित रिएक्ट करिवो and water का सहित oxygen and water सहित react करिवो and it forms what iron oxides कौन फॉर्म करिवो ना iron oxides मन रहिबो नेक्स्ट सो रॉक साइकिल लाइक एटा तो हमर कोन ट्रेडिशनल रॉक साइक्लिंग जेमिति कोन इग्नियस रॉक रु केमिति हमें मेटामॉर्फिक रॉक पाउचे अगेन सेटा पुनी रिसाइकिल होउची पुनी किछि वर्ष परे बहु माने किछि वर्ष माने एमति नै कि 5-10 वर्ष परे 100 वर्ष 200 वर्ष एमिति ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is called the fools of gold fools of gold को metal को हमर कहै छै is that brass copper sulfate iron sulfide or silver bromide काहे को कहै छै कोन ना fools of gold का कहै छै को fools of gold is commonly काहा को कहै छै ना this is the pyrite कहै छै पाइरिट को आउ कोन कहै छै मन रखन जदि पाइरिट एग्जाम रे पढिबो ताहाले भी राइट आंसर हबो एंड पाइरिट को आउ कोन कहै छै गाइस दिस इज आयरन सल्फाइड FeS2 आयरन सल्फाइड व्हाट इज Fe okay because of its metallic luster and pale brass yellow color actually color टा कोन ना pale देखंतु this is एक्जाक्टली कोन को टाइप रे आसुची टिके येलोइश लागुची ना पेल येलो टाइप रे रहउची ना सो आको कोन कहै छै पाइरिट भी कहै छै केमिकल फार्मूला कोन रहिबो ना FeS2 ओके नेक्स्ट देखो on which of the following scientific principles is an electric generator based को on which of the following scientific principles is an electric generator based Faraday's law of electromagnetic induction law of thermodynamics Newton's law of motion or superconductivity
कौन कह जाए ना दिस इज Faraday's law of electromagnetic induction जेते बेले इलेक्ट्रिक कथा आसिला इलेक्ट्रिक जनरेटर कथा आसिला को लॉ अकॉर्डिंग सेटा बिल्ट हेची ना Faraday's law of electromagnetic induction what is that look एटा कहारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ जनरेटर अंडर Faraday's law of electromagnetic induction ओके कौन से कहूची now which states that what changing magnetic field induces an electromotive force what now changing magnetic field changing magnetic field sorry electromagnetic field not only magnetic field changing magnetic field induces an electromotive force okay in a conductor ओके नेक्स्ट देखिबा एंड एटा केमिति वर्क करूची ना व्हेन ए कॉइल ऑफ वायर ओके व्हेन ए कॉइल ऑफ वायर rotates in a magnetic field then कौन होची ना द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कौन होची मैग्नेटिक फ्लक्स ता हमरा चेंज होची इंड्यूसिंग करंट इन द वायर again कौन होची ना दिस करंट कैन देन बी यूज्ड टू पावर इलेक्ट्रिकल वेव्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस and then the amount of induced the amount of induced EMF depends on the speed of rotation and strength of the magnetic field so this is how the electric what field generate होची हमर okay next देखिबा which among the following is used in making windows for the X-ray tubes? Next question. Which among the following is used in making windows for the X-ray tubes? That is barium, beryllium, calcium or magnesium. That is what? Barium, beryllium, calcium or magnesium. Koda haba? Now option 2 will be the right one. That beryllium. Beryllium is a lightweight metal with a low atomic number. Okay, beryllium is a lightweight metal with a low atomic number and it has highly transparent X-rays. Highly transparent to X-rays, allowing what? Allowing them to pass through the minimal absorption. तो एक्सरे हमर कोन हुए गोटे जगटा को स्कैनिंग करी करा जाए ना तो गोटे मिनिमल एब्जॉर्प्शन हे परुची बाय द हेल्पिंग ऑफ बेरिलियम एंड दिस मेक्स बेरिलियम द बेस्ट चॉइस फॉर द एक्सरे ट्यूब विंडोज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सो दिस इज द कोन टोटल हमर जो रहउची बेरिलियम मेथडटा केमिति होउची थ्रू बेरिलियम हमर एक्सरे रे हेल्प करूची ओके नेक्स्ट देखो which of the following had not been discovered by the time when Mendeleev published his periodic table? Which of the following had not been discovered by the time when Mendeleev published his periodic table? Guys, periodic table जो टाइम रे बाहरी थिला से पर्यंत हमर कोन ता नोबेल गैस बाहरी नथिला ठीक अछि ता परे हमरो नोबेल गैस बाहरी थिला टिल देन नोबेल गैस हमरो बाहरी नथिला सो ओके जोटा कि 1894 रे हमरो कोन नोबेल गैस बाहरी थिला नोबेल गैस देन हमरो 1894 रे बाहरी थिला दैट इज कोन ना ओनली आर्गन नॉट ऑल द नोबेल गैस ओनली आर्गन केते ना 1894 रे बाहरी थिला ओके
मन रहिबो नेक्स्ट चलो सो हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन एंड रेडन मन रख दिस आर द हीलियम एंड तांकर कॉन्फ़िगरेशन किछि मन रखिवार तो मन रखि दियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which among the following pairs is not correctly matched is that arsenic city bomb mercury hydrogorum and the potassium calcium sodium natrium कोटा हबो ना आर्सेनिक सिटी बम कौन इनकरेक्टली मैच है कहार ना आर्सेनिक सहित सिटी बम रो गाइस हाउ बिकॉज आमर एटा सब कौन ना देखंतु हाइड्रोगरम टा कौन रहउची इज द लैटिन नेम फॉर द मर्क्यूरी हाइड्रोगरम इज द लैटिन नेम फॉर मर्क्यूरी in the same way calcium is the latin name of potassium in the same way nitrogen is the कौन latin name of sodium but city bomb is not the latin name for the arsenic okay city bomb कहार रहिबो latin name ना for the antimony name for antimony okay आर्सेनिक रो सॉरी सिटी बम कहार रहिबो ना एंटीमोनी रो लैटिन नेम सो दैट्स व्हाई हमर इनकरेक्टली मैच हिजो कोन ना आर्सेनिक और सिटी बम सो नेक्स्ट कोन अछि देखिबा द क्वेश्चन इज who among the following is credible for the discovery of the expanding universe किए ना expanding universe पई किए responsible थिले किए ताकू नेके किछि थ्योरी बाहर करि is Alexander Friedman Edwin Hubble, Georges Lemaitre or William D. Sitter. Right answer कोटा हबो ना हमर Georges Lemaitre. Okay, सीए फर्स्ट टाइम पे हमर कोन करिथिले हमर जो थिला theory Big Bang theory. Okay, first propose the concept of an expanding universe depending upon what na Big Bang theory. Upon Big Bang theory and Alexander Friedman you can count him as a kona amara developed mathematical models predicting an expanding universe based on what Einstein's amara equations जो mathematical operations develop करूथिले कहा को नै कि ना Einstein equation को नै कि based on Einstein's equation. Okay. And the next option कौन अछि देखिबा Edwin Hubble. Edwin Hubble को हमें कोथि पे जानु छे Edwin Hubble is also responsible for कौन ना provided observational evidence for the expanding universe through redshift measurement. कोथि पे through redshift measurement. Redshift measurement कथा आसीले अपन काहा को मन पकेबे ना Hubble को ओके नेक्स्ट रहिला हमर किए ना विलियम डी सीटर तांकर कोन हमर लेटेस्ट रिवोल्यूशन रही छि जोथि पई कि हमें तांको चिन्हिबा कोन होई छि तांकर विलियम डी सीटंकर ना वर्कड ऑन सॉल्यूशन टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन describing an expanding of universe without matter describes universe without matter okay guys clear next देखिबा कोन क्वेश्चन अछि so expanding universe big bang theory को नै किए करिथिले ना जॉर्ज लैमेट्री मन रहिबा त किए करिथिले ना जॉर्ज लैमेट्री okay guys next देखिबा so knot is the unit of
Tell me, knot is the unit of what? Tell me, the options are acceleration, depth, distance or speed. So knot amara kahara unit rahibo? Tell me. So knot is the unit of what? Unit of speed. Knot is the unit of speed and it is the rate of movement of an object. It is the rate of movement of an object, okay, over time. And knot ताको कौन आमे कहूचे ना nautical mile per hour. Knot is what? Nautical mile per hour. So speed को आमे केमिति कैलकुलेट करूचे? It is the rate of movement of an object over time. गोटे पर्टिकुलर टाइम आमे तेरे दोउचे ता अनुसारे ऑब्जेक्ट ता केतिकी डिस्टेंस कवर करूची ताको आमे कहूचे कोन ना स्पीड, कोन ना rate of movement of an object. इठ लिखुची rate of movement of an object over a particular time, of an object over time, okay. Is what? Is distance. So samely acceleration रे हमर कोन होउची यूनिट हुआ? Acceleration manifest कोन को? Rate of change of velocity with respect to time. Rate of change of what? Velocity per unit time. ठीक अछि? मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमिति हमर रहउची कोन ताको यूनिट हम करूची. तो डेप्थ रहउची कोन? Depth it refers to how deep something is typically measured in meter. So depth केमते रहिबो? आमे केते डीपली मापी पारुचे मीटर. सपोज एमिति आमे मापुचे तार विड्थ टा मापुचे तबे एमिति मापुचे ता कोन डेप्थ टा मापुचे मीटर रे हेला सेंटीमीटर रे हेला त आमे ता कोन मापुचे फीट रे हेला ए सब कोन तार डेप्थ को मापुचे. So distance is nothing but it is the measure of a space between two points. Distance आमे केते बेले मापुचे जेते बेले गोटे पॉइंट A थिबो एंड गोटे पॉइंट B थिबो. तो एठु यारो accurate path across path ताको आमे कोन कहूचे ना the distance. Okay guys, next देखिबा. So knot definition अच्छी already कहि सारी छी फिर भी आपण मन देखि परिबे. A knot is a unit of speed used in navigation and aviation representing 1 nautical mile per hour. 1 knot is equal to 1 nautical mile per hour. Okay, next देखो. The atomic clock is based on the periodic variations. Okay, क्वेश्चन टिके आपण मानु केमती तेडा मेडा आसी जाउची बिकॉज़ म आपण को पई जदी टाइप करथांती बहुत लेट हे जंत हमर क्वेश्चन आनिया पे तो जेमिति हमको अवेलेबल मिलिला मते मु बस आपण मान के आंदी. ठीक अछि, म आपण मान को रिपीट भी करूची क्वेश्चन रीड करिवारे. आई होप किछि प्रॉब्लम हो. ओके, so the atomic clock is based on the periodic variations produced in the atom of which of the following elements. So ए जो टोटल हमर एलिमेंट्स अछि ऑप्शंस है बेरियम हेला, सीजियम हेला, मैग्नीशियम हेला, सोडियम हेला. तो अकॉर्डिंग टू these options क्वेश्चन पचाची the atomic clock is based on the periodic variations. atomic clock रे जो periodic variations हमें देखिवा को मिले ता भितर को एलिमेंट को हमें सेथरे यूज करूछ. ओके, तो आंसर दिया मते को एलिमेंट हबो. So the right answer is what? This is cesium. Okay, this is what? Na cesium. Cesium रा atomic number केते गाइस होची? This is 133. Okay,
याकू हमें कोथिरे ना एटॉमिक क्लॉक रे यूज करूछे कोथिरे यूज करूछे ना इट इज यूज सीजियम 133 को हम यूज करूछे इन द एटॉमिक क्लॉक because why because it has a highly stable vibration frequency यार कौन गोटे अच्छी ना हाईली स्टेबल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ओके तो व्हाई नॉट बेरियम बिकॉज बेरियम बहुत ही सॉफ्ट रहउची व्हाई नॉट मैग्नीशियम मैग्नीशियम बहुत लाइट वेट रहउची मेटल जोटा कि कोन अलॉय रे यूज हुए इट इज अ वेरी लाइट वेट मेटल यूज्ड इन अलॉयज ओके और जो फायर वर्क्स हुए सेथे हमर जो ओल्डिंग सोल्डिंग रे यूज हुए कोन हुए मैग्नीशियम हमर यूज हुए ओके बट एटॉमिक क्लॉक रे यार यूजेस बहुत ही कम अछि and why not sodium because it is a reactive metal sodium is a reactive metal okay next question देखिबा सो जो एते सारा वायर अछि ताको जो हमें होल्डिंग करूछे पूरा सॉफ्टवेयर रे कोन होल्डिंग करिया पड़ुछ ताको सेइथिरे हमें कहा को यूज करूछे ना हमें यूज करूछे पूरा सॉफ्ट जेहेतु अछि हमर कोन बहुत ही लाइक तर अलॉय रे हमें यूज करि पारुछे ओके एंड ताको हमें कोथरे यूज करि पारुछे व्हाट एवर yes so magnesium हम यूज करि पारछे कोथरे ना सोल्डिंग टाइप्स रे जो सब छोटो छोटो जॉइंट रहउची बहुत ही थिन वर्क रहउची हमें सेठी कोन यूज करूछे ना हमरा magnesium यूज करूछे नेक्स्ट देखो so number 40 question answer दियो the work done to move a unit charge the work done to move a unit charge from a point to another is called guys look suppose here is a point this is A and there is a point another point that is B so work done to move a unit charge from a point to another is called so गोटे work done complete करके charge को गोटे point रू आउ गोटे point को जीवा पाई ओके हमको ताको हमें कोन कहबा कंडक्टेंस कहबा करंट कहबा पोटेंशियल डिफरेंस कहबा और रेजिस्टेंस कहबा कौन कहबा ना राइट आंसर हबो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस कारण गोटे पॉइंट रो आउ गोटे पॉइंट को जाउचे तेबेला हम तार डिफरेंस ता को चेक करूचे फर्स्ट पॉइंट रे केते तार केते वोल्ट रे चलुथिला कि केते एम्पियर थिला नेक्स्ट पॉइंट को लाल को हम तार वोल्ट भी चेक करूचे सेम वोल्ट रे करंट फ्लो होउची ना नहीं ओके सो कोन अछि ना द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ओके it is the work done to move a unit charge from one point to another so what is conductance now the ability of a material to allow the flow of electric current the ability of material जोटा हमर रहउची कोन the ability of a material to allow the flow of electric current allow the flow of electric current इसी लेखि देजी बुझि परिबो ओके सो द लास्ट वन रेजिस्टेंस व्हाट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टर आपण माने जानि परथुए रेजिस्टेंस हेतिबो सो व्हाट इज रेजिस्टेंस ना द ऑपोजिशन व्हाट द ऑपोजिशन दैट ए मटेरियल offers to the flow of the electric current जेते बेले अपोज करूची रेजिस्ट करूची माने कोन मो बुझि पारुथुबे अपोजिंग करूथुबो कंडक्टेंस माने कोन सेमली जाउथुबो रेजिस्टेंस माने कोन अपोज करूथुबो इलेक्ट्रिक करंट जो डायरेक्शन रे फ्लो करूची जेते बेले गोटे रेजिस्टेंस हम लगे दोची ताकि सेठी कोन सडन के ब्रेक दे दोची तो तार माने कोन रहउची रेजिस्टेंस बुझियला नेक्स्ट देखिबा सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट batteries lift charges to a higher potential there is a potential difference because each column of a charge has a different potential energy at either end of the battery for example this side गोटे टाइप रो चार्ज थिबो चार्ज at high point but this side charge at low point okay
सो टोटल टाको हम कौन करूचे ना डिफरेंस टाको पोटेंशियल डिफरेंस भाबरे नौचे नेक्स्ट देखिबा नाउ टेल मी who among the following is a who among the following is a non conservative force tell me who among the following is a non conservative force is that electrostatic force is that frictional force is that magnetic force is that spring force कोटा हबो this is following is a non conservation force electrostatic force is a conservation force magnetic is a conservation spring is a conservation so odd one out frictional force is a non conservative force okay because it kona यार जो एनर्जी हमर आसुची as a heat and depends on the path and depends on the path taken so frictional force से जो एनर्जी हमर रिलीज होउची से डिपेंड करूची कहा को जो एनर्जी as a heat हमर रिलीज होउची डिपेंड करूची जो पाथ देकी से हमर आसुची से पाथ ऊपर ही डिपेंड करूची बिकॉज़ फ्रिक्शन होउची फ्रिक्शन को से पाथ ही हबो सो फ्रिक्शन ऊपर ही डिपेंड करिवो दैट मींस जो पाथ रे आसुची से पाथ ऊपर डिपेंड करिवो so that is frictional force and what is why not electrostatic force why not magnetic force why not spring force because electrostatic force is a conservative force work done is path independent and can be work and can be recovered okay so ये कौन होची हमरा कोनो से path ऊपर डिपेंड करेनी and can be recovered in anywhere it is path independent same thing magnetic force and spring force as well okay clear guys next देखो so what is conservative and what is non conservative force conservative is independent of path whereas non conservative is depends upon the path conservative force ra kon say work in round trip as zero work in round trip is not zero conservative रे total energy remains constant but non conservative रे energy dissipated as heat energy and conservative ray completely recoverable but non conservative ray not completely recoverable whereas conservative ray force is negative gradient of potential energy but non conservative ray no such relation exists okay this is the common difference next question dekho the inability of a body to change its state of rest or uniform motion the inability of a body to change its state of rest or uniform motion by itself is known as what is it is displacement or it is force or it is inertia or it is momentum आउ थरे क्वेश्चन कहूची the ability of a body to change its state of rest or uniform motion by itself is known as what tell me this is what this is inertia okay so inertia kon कहूची the property of a body that resist charge that resist changes of its own state कोन state of rest or uniform motion then ताको हमें कौन कहूचे ना inertia कहूचे why displacement काहा को कहूचे गाइस हमें and force काहा कहूचे and momentum काहा कहूचे displacement तो तमे जानछो shortest path टाटू गोटे distance जोले cover करे सबुठू shortest shortcut रास्ता जोटा हमें कहिबा shortest path टाको हमें कोन displacement कहूचे and what is force work done is the force what is momentum the product of an object mass and velocity it describe motion okay but doesn't relatable with the uniform of motion next देखिबा so this is the Newton's first law according to the हमें motion विषय किसी जानी परिबा जेंति कि every object persists in its state of rest or an uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that the force impressed on it okay जे पर्यंत गोटे applied force पड़ीनी तार state of change of rest or motion हमर change हबनी okay next question
Which of the following cases the apparent weight of a body in an elevator becomes zero? Tell me, in which of the following cases the apparent weight of a body in an elevator becomes zero? Is it during free fall of a body under gravity, or it is when the elevator is accelerating downwards, or when the elevator is accelerating upwards, or when the elevator is at rest? Tell me, ketebele haba zero? When an elevator becomes zero? Weight of a body, not elevator पचारची आमे जदि गोटे एलिवेटर भितरे जाउचे देन हमर बॉडी रो वेट केते बेले जीरो हबो को जेते बेले कोन हबो ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी सेबे जाय के हमर जीरो हबो राइट सो आमे कोन बुझी परिबा द अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इज द नॉर्मल फोर्स exert करूची okay normal force exerted by what by the surface on the body normal force exerted by the surface of the body okay so next देखिबा so constant होउची केते बेले देखंतु constant speed होउची 0 the upward होउची downward होउची and तेले downward होउची कोन होउची acceleration हे जाउची 9.8 मीटर पर सेकंड जोटा कि केते ना अर्थ रो ग्रेविटी सहित समान सो तेले अर्थ रो ग्रेविटी सहित समान हे जिवो सेते बेले हम बॉडी टा भी 0 बोली काउंट करिबानी की बुझी पारुछो but in a freely falling elevator ame kon kahi pariba or a body in free fall both the body and the elevator accelerate downward accelerate what downward thus we can say with the same acceleration due to gravity the acceleration due to gravity is what this is 9.8 meter per second square okay guys next देखिबा तो बुझी पारछो तो नले भाबिबो कि एठी तो 0 अछि एटे काई होबनी जते बेले तळु को हमर आसुची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हे जाउची हमर कर अर्थ सहित सेते बेले हमर कोन होउची thus we can say there is no normal force acting on the body okay the apparent weight becomes 0 हे जिवो apparent weight केते हे जिवो जते बेले सेम एक्सेलरेशन हमर आसुची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सहित समान हे जिवो सेते बेले हमर apparent weight केते 0 हे जिवो okay next question देखियो when a body is immersed in a liquid the upward force experienced by it is known as when a body immersed in a liquid जबरदस्ती आमे ताकू बुडौछे then upward force experienced by it's known as ते बेले बुडौछे तो ऊपर जो फोर्स टा पडुची तळु को जाउची तो ताकू आमे कोन कहउची is it buoyant force or is centrifugal force or it is hydraulic force or it is tangential force tell me what this is buoyant force why because when a body is immersed in a liquid it experiences on upward force exerted by the liquid is called as buoyant force according to the Boyer's theory and we can say what is buoyant force kahuchi this force is called buoyant force or ताको हमें आउ कोन कहूचे not only कि buoyant force जदि या बदले रे आपनकर upthrust थांता ताहाले हम ताकू भी कहि पारि थांते तो upthrust force जोटाटा कहा को प्रिंसिपल को अंडर आसुची को प्रिंसिपल ना दिस इज अंडर Archimedes principle what upthrust Archimedes principle okay guys next देखिबा
Okay, so centrifugal force episode जानी दियो. Centrifugal force is what? ना act outward in a rotating centripetal inward centrifugal outward. बस एतिक मन रख. बाकी सेंटर कथा दिला सिला माने मन रखिबो गोटे कोन सर्क्यूट. जेतेले सर्कल ले हमर कोन होची गोटे बॉडी मूव करूची and act outward in a rotating system, not in a liquid. Okay, rotating in a system रे जेते बुलुची जो applied force ताको outward जो force ता पकोची सेटा हला centrifugal force. Inward जेते बेले हमर act करूची gravitational force according सेते बेले हम कोन कहूचे ना centripetal force. Okay, next. And hydraulic force is what? Now relates to pressure in fluids. Relates to pressure in a fluid. Hydra means fluid asigala. So pressure in fluid is what? Hydraulic force. And what is tangential force? Tell me what is tangential force? This is nothing but acts along a surface. Acts along a surface. When a body acts along a surface, we can say tangential force. Okay, next question देखो. So buoyancy is what? जेते बेले उडो ऑब्जेक्ट को आमे कोन करूचे तळु को पुश करूचे लिक्विड रे सिंक करूचे सेते बेले जो फोर्स अप्लाई होचे आमे ताको कहूचे buoyant force. Okay, next question answer दियो. Which of the following is responsible for the production of an echo? Tell me which of the following is responsible for the production of an echo? आपण भाबे कि मैम एटा कोन एते पूरा सीधा सीधा टाइप हेची अरे ना रे सेटा एक्चुअली बहुत ही लाइक टोटल पढी हला सिचुएशन रे तमानकर नथिला सेथि लागि ताको आनी कि पुन थरे टाइप करछ. ओके, which of the following is responsible for the production of an echo? Is it absorption of sound waves? Is it reflection of sound waves? Is it okay, is it refraction of sound waves or transmission of sound waves? कोटा हबो समस्ते भाबुथबे इको देखो जते बेले एब्जॉर्ब करि जाउची साउंड वेव ता इको कोन पई हबो हबो कि ना जते बेले बाजी की पुनी रिफ्लेक्ट करिवो साउंड ता सेते बेले इको होची तो ऑब्वियसली कोन कहबा ना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. Okay, reflection of sound waves. An echo occurs when a sound wave is reflected off a surface and returns to the listener after a time decay. तो केति की गोटे टाइम गैप रे जते बेले बाजी की आसी की पुन थरे से आपण माने पाखु कोन से कथा कहउतबे सपोज गोटे हॉलो रूम टे अछि रूम रे किछि भी जिंस नाही सेते बेले आपण तले हम कन्वर्सेशन करूची कोन होउची एते बेले बाजुची आसुची आवाज ता पुन थरे रिटर्न करूची दैट मींस हमर इको होउची. ओके, जेते जदी बहुत सारा सामान हम रूम भीतर हम रखि देबा ताहाले जेते बेले साउंड ता आसीबो तो से साउंड दा कोन ऑब्जेक्ट उडा किछि एब्जॉर्ब करि जिवे रिफ्लेक्ट हेबा को देबेनी आइदर कम देबे नहले देबेनी. ओके, so this is the because of the reflection of sound waves. Got it? Next देखिबा. And आउ गोटे मेन थिंग या विषय में ऑन रख देखिबा गोटे मिनिमम डिस्टेंस थाए गाइस. ओके, the minimum distance required between the minimum required between what? Now between the source and the reflecting surface, between the source and the reflecting surface ए time टा केते कैसे सही थाए ना of an echo to be heard is केते ना 17. ओके, केते रहिबो ना 17 मीटर. ओके, so minimum gap केते रखिया को पड़िबो ना 17 मीटर in air at normal room temperature. Okay guys, next देखिबा.
सो देखो जितेबाला साउंड सोर्स टा हमर बाहर छि सपोज गोटे ऑब्जेक्ट रे जितेबाला जाई कि रहउछि देन देखो ग्रीन गुडा होछि कोन ना वापस आसुछि द ग्रीन लाइंस आर द इको वेव्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल टेल मी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल देखंतु हमर जेहेतु हमें कोन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूचे बोथ साइंस रो सब पार्ट आसीबो इवन हमर कोन हम कवर अप करबी तमर कंप्यूटर रे भी क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि जेति के हमर मु कलेक्ट करि पारि छी 19 रो 22 भितरे त आपनकर सब आसीबो ओके so this is nothing but the pattern you must know before giving any exam at least for the Odisha Police SI. So which of the following is not a component of chlorophyll? Is it calcium, carbon, hydrogen or magnesium? Tell me. This is not hela देखो carbon तो hydrogen magnesium हबो जे not हबो कोन हबो ना calcium हबोनी chlorophyll लो गोटे कोन component. Why? Na chlorophyll is green pigment. Okay, is green in color. Green pigment responsible for कोथि पई ना for the photosynthesis. Okay. So या सहित हमर calcium रे कोन अछि relation किछि नै because its structure includes कोन carbon तार structure रे रहउची जोटा कि C रहउची hydrogen रहउची okay and हमर कोन ना magnesium रहउची oxygen रहउची nitrogen रहउची but there is no space for the what? Calcium. Okay guys, next. Which of the following plants reproduces itself by means of spores? Which of the following plant reproduces itself by means of spores? कौन कहूची? Is it coriander? Is it fern? Is it mustard? Or is it petunia? Tell me. कौन हबा? The right answer will be spore is always related with what? Na fern. Okay? So amar jo spores achi seta reproduce karu hochi kouthu na through the fern. Sorry, ferns are reproduce hochandi kouthu na ferns are reproduced through the spores, not from seeds or not from the flowers, from the spores. Mane rahiba. So spores are reproduced in structure called sporangia. कौन कहूचे स्पोर जो स्ट्रक्चर रे रिप्रोड्यूस करूची ताकू कौन कहूचे ना दिस इज स्पोरेंजिया ओके यूजुअली फाउंड ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स अंडरसाइड ऑफ फॉर्न लीव्स ओके नेक्स्ट देखिबा देखंतो दिस टाइप ऑफ लीव्स तार जड़े पत्र रे एटा उल्टा डम देखु छिला पत्रटा ऊपर को मुह करी अछि ता तळ पटे एमिति गोल 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 हेकी देखा जाय दीज आर व्हाट ना स्पोर्स ओके नेक्स्ट चलो which floral part in the plant produces the pollen grain tell me which floral part in the plants produces the pollen grains is it anther is it ovary is it petal or it is sepal को पार्टा आमर प्लांट रो प्रोड्यूस करूची पोलेन ग्रेन्स टेल मी दिस इज anther what this is anther so anther is a part of a stamen कोथिरा पार्ट रहउची ना पार्ट ऑफ अ stamen in the flower okay stamen in a flower and stamen कोन कहउची हमें ताकू ना male reproductive organ is stamen this is the male reproductive organ okay and it reproduces and stores pollen grains which contains male gametes for fertilization कोथ पई ना male gametes को से स्टोर करी रखुची for the purpose of fertilization okay is that clear so ovary कोन प्रोड्यूस करूची ना ovum
Okay, ovary produces ovum or you can say ovules. जोटा कि कार ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, फीमेल गैमेट्स ताकू कहूचे हमें. फीमेल गैमेट्स. पेटल इज व्हाट? पेटल्स आर कलरफुल स्ट्रक्चर दैट अट्रैक्ट द पोलेन्स. एमते हमें कोन कहूचे? सपोज दिस इज द हम जो फुलर पाखुडा कहूचे. ओके, सो दिस इज द फ्लावर सपोज एंड these आर द okay, so these are the what? Petals. Okay guys, so next sepals. Sepals protects the flower bud before what? Before blooming. So ଆମର କଢଟା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପତଲା ଲେୟାର ଟେ ହେଇକି ଥାଏ ଗ୍ରୀନ କଲର ର. କଢଟା ଯେତେବେଳେ एकदम କଢ ହେଇ ନଥିବ ସେପଟେ କଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କଲର ଲେୟାର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ସେପାଲ. ମନେ ରହିବ. ନେକ୍ସଟ ଦେଖ. So animals is related to what? Na hemoglobin. In the same way, plants are related to what? Is it keratin? Is it cellulose, chlorophyll, or what? Na xylochrome. Tell me. जेमिति animals hemoglobin सहित relate करूची सेमिति plant कहा सहित relate करिवो. And this is chlorophyll. Because hemoglobin काम कौन होची animal case रे? Na transporting of oxygen. Transporting of oxygen in the blood. Hemoglobin टा कोठी हमरे blood रे मिसी की रहूची, RBC रे रहूची. So hemoglobin in animals is responsible for oxygen transport in blood. And it कौन contain करूची? It contains iron, gives blood a red color. In the same way, chlorophyll रे कौन contain होची? The chlorophyll in plants is responsible for photosynthesis and it gives the plant a green color. Okay, ताकू एमिति relate करिकि ही मन रखिबो. Next देखिबा. And what is carotene? ठीक है, जानी देथा is a pigment responsible for orange color. Okay, orange color in carrots. Orange color कोठी थाए? सब प्रकार गछरे तो न थाए ना, only carrots रे थाए. So carotene is due to the presence of carotene in the root of carrot vegetables. This color is orange. So why not cellulose? What is cellulose? Tell me. Cellulose is a structural component of a what? Of a plant cell wall. Cell wall so that relatable. And what is the xylochrome? Xylochrome is involved in electrons transport in cell. Is involved with what? Involved with the electron transport in the cell. Okay, clear guys? Next देखिबा. So what is chlorophyll? Na chlorophyll amara experts claims and research shows that chlorophyll can do many things like boost red blood cells, help with weight loss, and heal damaged skin, neutralize toxins, reduce gut inflammation, and prevent cancer. Okay, next देखिबा. Which among the following are the non-green heterotrophic plants? Tell me, which of the following are the non-green heterotrophic plants? The options are algae, ferns, fungi, or the mosses. So the right answer will be what? This is fungi. This is a non-green heterotrophic plants. Heterotrophic plants because heterotrophic plants do not produce their own food and depend on the food source for others. Okay, depend on others for their food source.
So that's why we can say that heterotrophic plants. So fungi is a kind of what? Heterotrophic plants. That's why because it cannot produce its own food. Okay, because fungi lack chlorophyll and cannot perform in photosynthesis. Fungi पाखरे कौन न थाए ना chlorophyll न थाए. That's why it cannot perform in photosynthesis. It cannot perform in photosynthesis. Okay. Baki algae ho, ferns ho, mosses ho, they are having chlorophyll pigment. That's why they are green in color. Okay. Non-green katha pacharichi gotti character dekhi ki all one out. Next question dekho. So these are the kind of what? Fungi. जोटा कि फंजिस न होले भी हम ताको कहि परिबे नॉन ग्रीन प्लांट्स नॉट फंजिस दीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स तो फंजिस को एग्जांपल ले कोन नै परिबो ना हमरा मशरूम ओके व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स टेल मी the options are ampicillin or this is chloramaphenicol or this is paracetamol or it is penicillin. Tell me what will be the right answer. This is chloramphenicol. Okay. Question is which among the following is a large spectrum antibiotic. जमा भी भाबिबनी कि पूरा इजी क्वेश्चन आसीबो बोली एसआई एग्जाम रे बिकॉज़ एसआई एग्जाम रे बहुत ही टफ क्वेश्चन आसे ओके सो बी रेडी सब लेवल को जाई कि प्रिपेयर पूरा बूस्ट करो ओके केमिति प्रीवियस ईयर आसीतिला ता अकॉर्डिंग आपण माने प्रिपरेशन करंतु के टीचर्स आपण माने को सजेस्ट करूथबे चिल हे कि पढ एग्जाम रे बहुत इजी क्वेश्चन आसीबो नॉट एट ऑल एग्जाम एसआई एग्जाम रे बहुत ही टफ क्वेश्चन आसे ठीक अछि. So, which among the following is a large spectrum of antibiotic? This is chloramphenicol. Okay. So, broad spectrum antibiotics are effective against a wide range of what? A wide range of bacteria, including both what? Gram positive and gram negative bacteria. Gram positive and gram negative bacteria. Okay. So, chloramphenicol is a broad spectrum antibiotic that inhibits what? Bacterial protein synthesis and is used to treat serious infectious like typhoid hela. Au kon disease rahuchi amara bacterial conjunctive jaha bhi disease rahita. For example, gote lekhita typhoid. For example, apan lekhitantu typhoid. So, this is a antibiotic because of kona chloramphenicol amara typhoid disease heithae okay ampicillin dekhantu ampicillin hela ye bi amara gote kona na broad spectrum antibiotic but this is less effective than the chloramphenicol. Next dekho so narrow spectrum broad spectrum kiche options achi penicillin is a narrow spectrum and the cephalosporin is a narrow spectrum clindamycin is a narrow spectrum and the metronidazole is a narrow spectrum whereas amoxicillin hela and augmentin hela and the azithromycin hela tetracycline hela or the moxifloxacin these are the what na broad spectrum word ura tike medical terms achi use like mon rakhe ko bahut difficult habo still you have to remember this okay au kichi option nahi because question ahuri bhi tough yaro poke dochi. Next, from which of the following animals is angora wool obtained? Tell me from which of the following animals is angora wool obtained? Is it fox? Is it goat? Is it rabbit? Is it stick? Tell me. So, angora wool is obtained from angora rabbit. Is obtained from what? Angora rabbit and it is known for its softness
तार बहुत सॉफ्ट टाइप रो उल्टा रहिबो सॉफ्टनेस एंड तार कोन वार्मथ एंड फाइन टेक्सचर ओके कोथि पई ना हमरो एंगोरा रैबिट ओके नेक्स्ट हमरो फॉक्स रहिला गोट रहिला शीप एमन गोट शीप तो हमरो निया जाय वूल बट दिस इज नॉट soft as and angora word is relatable with the rabbit. Next, this is the picture of the angora rabbit. देखुछन्ती केते जोरे तार रूमटा बाहरी ची आ सेति की सॉफ्ट मध्य. Okay. Next question. Match each of the following factors in column A with corresponding diseases in column B and select the correct answer set from the table given below. So now tell me what will be the right one. So tell me bacteria is related with what? Amoebiasis, elephantiasis, hydrophobia, osteomalacia or pertussis or this is what? Ringworm. So bacteria is related with what? Now this is pertussis. So A ka sahita gala, B sahita gala. And fungi is related to with amoebiasis and elephantiasis. And the options fungi amara kahaku nei jiba ringworm. Okay, fungi is related to with ringworm. B V I. So next helminthiasis को हमें कहाँ सहित connect करिबा. This is elephantiasis. This is C double I. Okay, and protozoa is related to what? Na amoebiasis. Protozoa is related to amoebiasis. This is D related to I, and the rest rahila gote virus. Virus is related to what? Virus is related to hydrophobia. Okay, so E is related to triple I. So this is the right manner. अपन मान चेक करि देबे एंड या अकॉर्डिंग जदि किछ आंसर देइथिबो क्वेश्चन देइथिबो या क्वेश्चन टा आइदर लाइक इरेज हे जाइछि और नाही आई डोंट नो बट जदि एमति आस्थियो आंसर चूज करियो. नेक्स्ट देखो तो टेंस एंड पैटर्न्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क फैक्टर लाइक कोन होउछि स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्टिल इट अफेक्ट्स आवर बॉडी आवर हेल्थ and harmful use of alcohol, physical inactivity or unhealthy diet and nutrition and tobacco uses and air pollution. Okay guys, next देखो. Which part of the human body is the pituitary gland located? सबुठु easiest one ना कौन? Which part of the human body is the pituitary gland located? Brain, intestine, kidney, liver. What will be the right answer? This is brain. The pituitary gland is located at the base of the brain, just below the what? Hypothalamus. Just below the hypothalamus. Okay. And amar kahaku pituitary gland ko au kon kha jaye? This is the master gland. Okay, but this is master gland boli taku kahate because it regulates the secretion of various hormones that control growth hela and amaro metabolism hela and reproduction hormone jete sabu hormone baharuchi body re taro kono balance karuchi taku kiye na amara pituitary gland. Okay, and there are two main parts are there. One is anterior pituitary and one other is the posterior pituitary. One is what? Anterior pituitary. Another is posterior pituitary. Okay. बाकी intestine आमर digestive system रो fat. Okay. And kidney आमर different कौन होची? Excretory organs. तो ये भले आमे कौन? odd one out कर दबा. Liver होची कौन? ना liver is the largest internal organ भाबरे exam रे पढ़िबो answer दबा. So pituitary gland रो posterior lobe this one is anterior lobe this one ताकू different करा इछि दीटा hypothalamus रहिला ऊपर तार just नीचे रे देखा रहउछि कोन just तळे रहउछि pituitary stack जोटा कि हम कोन pituitary gland बोली कहउछि. Okay guys, next,
which of the following is a female sex hormones? एबे just कहितली male ना ना एबे कहना sorry सेटा flower विषय कहित ना. Okay, tell me which of the following is a female sex hormone? Is that androgen, estrogen, insulin or oxytocin? Tell me. Androgen ଆମର କଣ ହଉଛି ନା this is the male sex hormone. And estrogen is the female sex hormone. Okay. Next iba insulin tamane samasthe jante insulin is what? Is a metabolic hormone. Okay, oxytocin is a hormone produced by the hypothalamus and released by what? And released by the pituitary gland. And released by what? Released by the pituitary gland. Okay. Next देखो. So the effects of what? Estrogen body रे रहिले effect कौन कौन होउची ना heart उपरे protects from cholesterol to the same level ला कौन estrogen हम body रे रहुची. Then liver cholesterol production regulation करिबार help करे, bone strength density increasing करूची, skin को anti aging effect हमर provide करूची, brain body temperature adjustment करूची with a memory function, libido adjustment करूची, breast growth feeding function, ovary कौन maturation stimulation, uterus रवि monthly preparation for the pregnancy or menstrual cycle को हमर कौन proper conduct करूची due to the presence of healthy or in the proper percentage of कौन estrogen in our body. Next question देखो, which of the function button for spelling and grammar? Computer question आसिगला guys. Tell me which of the function button for spelling and grammar? F3, F5, F7 or F9? कौन हबो? F3 टा हमरा कौन रहउची? Used for insert auto text. Used for insert auto text. And F5 is responsible for what? Now F5 is responsible for the used for refresh page in web browsers. जो web browsers रे हम रहउचे ताकू refresh करिबा पई बार बार हम यूज करछे कहाको ना F5 यूज करूछे. So the right answer will be what? Na F7. Okay, spelling check हम करछे F7 ने spelling check का. Okay. And F9 हमर कोन? F9 हमर MS Word रे refresh करूछ. MS Word रो refresh button. Okay. Next question देखो. So to access it, click the spelling and grammar button on the standard toolbar. Press F7. Okay. Next, for addition of a row at the end of a table, move the cursor at the end and use. कौन यूज करिया पड़िबो गोटे एडिशन रो करिबा पई? Alt tab control or shift? Tell me. This is tab. Okay, cursor को आनी की tab हमें कली MS Word and other text editors हमें जते बेले कौन करूछे ना जते बेले प्रेस करूछे tab at the last cell जते बेले last cell को आसी की tab प्रेस करूछे again आ गोटे tab add हो जाउछ सेतरे. Okay, automatically add से new row हमर new row add हो जाउछ. Okay, next देखिबा. Which command is used to restore? Which command is used to restore a sentence erase just now? Just now आसला पर हमर उटा ऑप्शन आसे either undo नहले redo. So undo and redo ए दुटा भीतर आपण माने कंफ्यूज हेबे. ए दुटा तो odd one out कर देले. So option कोन हबो ना undo will be the right one. Okay, reverse the last action you have performed including deleting text hela, formatting changes hela and other actions हमर कोन undo button मारला परे पुनी back to normal हे जिवो. Okay, and shortcut देखो में कोन control Z भी यूज करूछे ना undo पई control plus Z यूज करूछे ना
Next देखिबा, next को MS Excel is a what? Word processing program, spreadsheet program, presentation program, or none of the above. MS Excel is a word processing program, spreadsheet program, presentation program, or this is none of the above. Tell me, MS Excel is what? This is a spreadsheet program. MS Excel is a spreadsheet program. Function कौन होता है? Used for creating and managing spreadsheets containing numerical data, performing what? Performing the calculations, creating charts and analyzing data using कौन कौन कोची spreadsheet programs रे? Suppose लिखो example तुम दे परिबो used for creating and managing spreadsheet, used for next हम लिखि परिबो कोन ना containing numerical data, performing calculation and all. Okay, next देखिबा example तमे दे परिबो कोन Microsoft Excel. MS Excel is the example. Next, the software which contains rows and columns is called. जो software रे both हमारा rows and columns रहुची मिसिकी ताको हमें कौन कहूचे? Spreadsheet, word processing, database or none of the above. कौन कहूचे? This is spreadsheet. Okay, तार function कौन होची ना software used to store, organize and analyzing data using a what? Using a grid of rows and columns. ताको हमें कौन कहूचे ना spreadsheet. Okay, these often used as calculations and the data visualization. ताको हमें कौन कहूचे? This is known as spreadsheet. Okay, so next question कौन अछि देखिबा? That formulas in Excel start with. Formulas in Excel starts with what? Okay, the options are hashtag, percentage, equal to or plus. What will be? Formulas in Excel are start with कोउथिरे देखंतु वर्ड एक्सेल रे हमें जत्ते बेले भी किछि एक्सेल पावर पॉइंट रे यूज करू छे फॉर्मूला तते बेले ऑलवेज स्टार्ट हबो कोउथिरु ना स्टार्ट होउछे हमर सिंबल इक्वल्स टू रु कोउथिरु ना सिंबल इक्वल्स टू. ओके, एंड एटा सिग्नल कोन करूछि? दिस सिग्नल्स दैट व्हाट? दैट to Excel that the following input is formula, the following input is the formula, the following input is a formula or a function, not plain text or a नॉर्मल टेक्स्ट नुह या फिर हमें को नंबर नहीं को नंबर नुह बोली ताकि केमती कैलकुलेट कंप्यूटर केमती जानिबो तमे जोटा टेक्स्ट करूजो सेटा गोटे नंबर नुह कि टेक्स्ट नुह सेटा गोटे फार्मूला बोली केमती जानिबो तते बेला हमें इक्वल्स टू सिंबल ले स्टार्ट करूछ. ओके, फार्मूला. ओके, नॉट अ नंबर और नॉट अ टेक्स्ट. क्लियर? नेक्स्ट देखिबा. So, shortcut to insert a new slide in current presentation is shortcut to insert a new slide in current presentation is what? Is Control plus M,
control plus L, control plus S or control plus N. मु आउ थरे कंप्यूटर जदी तुम माने ऑलरेडी 500 एमसीक्यूज हमर अपलोड हेची जदी क्लास करिथिबो देन सेथिरे हमर एटा डिस्कस हेची कंट्रोल कोन हबो देखो n भाबी कहबे न्यू हबो बोली किंतु n बदलले ता पूर्वरु की आसुची n रो मा होची m तो m सब बेले न्यू न्यू जन्म करूची एमिति रिलेट करके हम ताको मन रखैथिलु क्लास रे so kon habo the shortcut to insert a new slide in current presentation is what this is control plus m okay control plus m okay and control plus sorry l kon rahuchi used to this is l or I you can say no the small I is okay this is I capital I control plus I okay control plus I is related to what control plus I is related to italize sorry italize I yes kon kariba na italicize hochi okay italicize the selected text को control plus I control plus A kon hochi na to save this is for save and control plus N is guys what this is for the used to create a what new presentation not a not to insert not a new slide not a new slide not a slide but a presentation to new presentation used to insert a new presentation next देखिबा next कौन अछि the spelling dialog box can be involved by choosing spelling from co-menu the spelling dialog box can be involved by choosing spelling from which menu insert file view or tools tell me what will be the right answer guys the spelling dialog box can be involved by choosing spelling from which menu this is what na amaro tools menu कोथिरु ना tools ru okay tools ru केमिति पाइबा ना in order versions of Microsoft Office कोथिरु Microsoft Office ru the spelling dialog box is accessed from the tool menu कोठु ना Microsoft Office रा tool menu ru आमे spelling dialog box को access करि परिबा okay next देखिबा pressing F8 key for 3 times pressing F8 key for 3 times selects what a paragraph a sentence a word or entire document kuha pressing what pressing F8 kon karuchi na a sentence what a sentence pressing F8 in Microsoft Word activates that selection mode कोन ना सेंटेंस को सिलेक्शन करूची फर्स्ट गोटे टाइम जदी यूज करूचे जदी वन टाइम यूज करूचे कोन होची ना वन टाइम यूज करले एक्टिवेट सिलेक्शन मोड होची एक्टिवेट सिलेक्शन मोड होची एंड टू टाइम्स करले कोन हबो ना सिलेक्ट ए वर्ड हबो and 3 times कले कौन हबो select a sentence हबो okay select a sentence हबो और 4 टाइम कले select a paragraph clear and सेमिति अछि जदी 5 टाइम करूचे कोन होची ना select the entire document okay एठे पछाची केते ना 3 टाइम्स पछाची 3 टाइम्स ले कोन हबो
Select a sentence. Jodi 5 times पचार थांदा entire document. Entire doc. Okay. Next देखिबा. Give me a minute. Okay. So now tell me, when we can create a chart on a separate sheet in the same workbook, it is called as a what? When we can create a chart on a separate sheet in the same workbook, it is called what? Chart sheet, embedded chart, view sheet or view chart. Tell me what? When we can create a separate chart, we can create a chart on a separate sheet in the same workbook. It is called what? Chart sheet, embedded chart, view sheet or view chart. कौन होगा? This is chart sheet. Okay, this is what? Chart sheet. So what? ଯେତେବେଳେ chart sheet रे कौन होची? ଯେତେବେଳେ separate ଆମେ କରୁଛେ. A chart sheet is a separate sheet in the same workbook where you can or we can create a view, a chart without any addition data visible. Without any addition of data visible. Okay. So in contrast, आमे कौन कहि परिबा? An embedded chart is placed within a worksheet alongside the data. Within a worksheet alongside the data. Clear, guys? Next देखिबा. What was the first spreadsheet on a microcomputer? Tell me, first spreadsheet microcomputer रे हम use करछे सेटा कोन? Is that VisiCalc? Is that Excel, Lotus 123 or StarCalc? Tell me. Right answer will be this is VisiCalc. First spreadsheet on a microcomputer कौन हेतिला? This is VisiCalc. Release हेतिला केबे? 1979 रे. Okay, release हेतिला केबे? ना 1979 for the Apple II रे. Okay, it was the first spreadsheet program available for microcomputers. कहाँ पे? For the microcomputers. Okay, जोटा कि first personal computers also Apple 11. First microcomputers use हेतिला for the personal purpose. So for the personal computers we can say. Okay. टिके problem है ही पारे because guys sorry for the inconvenience. ए साइड रे जो वर्ड उडा रहउची लाइट रो रिफ्लेक्शन पे गोटे गोटे वर्ड मते ठीक से पढ़ी पारुनी रीडेबल होउनी मन टिके साइड हे की पढ़िया को पड़ुची. ओके, so next question देखिबा. Which sign is used to create an absolute cell reference? Which sign is used to create an absolute cell reference? Is that dollar, at the rate, and or percentage? को sign हम use करूछे? Tell me. Create an absolute cell reference. For creating an absolute cell reference. This is what? Dollar. Dollar is in Excel, placing a dollar sign before the column letter and row number makes the what? Makes the reference absolute. Make the reference
absolute. Okay, so that's why आमे कौन यूज करूचे डॉलर. फॉर एग्जांपल तुम देखिबो सपोज डॉलर ए डॉलर एंड 1. ओके, ताफरे कौन होची ऑलवेज रेफर्स टू सेल A1, always refers to cell A1. Okay, and तमे एठू कॉपी करिके elsewhere किछि भी कोठी कॉपी पेस्ट भी ताकू करि परिबो फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट देखो. Now, which of the following identifies a cell in Excel? Which of the following identifies a cell in Excel? Is that address, formula, name or label? Tell me, which of the following identifies a cell in Excel? This is what identify जते बेले करूची ता नेम रु भी आइडेंटिफाई करूथबो. एमिति आपण भाबिबे ना कोथिरु ना एड्रेस रु आमे देखुचे जे कोनसी कंप्यूटर रु कोन आईपी एड्रेस आमे करूचे. इन द सेम वे जे कोनसी एक्सेल को भी आमे आइडेंटिफाई करूचे कोथिरु ना तार एड्रेस रु करूचे. ओके, इन एक्सेल a cell identified by its address which is combination of the column, letter and row number. Okay, कोथिरु this is column, number, row or letter. एमती नहीं परिबा. ओके, सपोज कॉलम नंबर हमर कोन हैला कॉलम नंबर हैला A1. ओके, एंड रो लेटर हमें कोन नहीं परिबा सपोज B2. सो A1 B2 कोटा हबो ना सपोज दिस इज अ स्प्रेडशीट. ओके, this one is A1 and suppose this one is B2. So A1 and B and eta B2 थिबो. Okay, this is 1 1 1 and this is 2 2 2 2. So A1 B2 हेले कोन हबो हमें ना एटा को हम सिंबल करूची. This is B1 B2 B3 एमती हेकी थिबो. A1 A2 A3 थिबो. तो A1 B2 हेले कोन हम एटा को सिंबल करिबा. Okay, next देखो. A team of authors can now work simultaneously on a document stored on a quiz server. A team of authors can a team of authors can now work simultaneously on a document stored on a quiz server. Is it Microsoft Excel 2010? Is it Microsoft PowerPoint 2010? Is it Microsoft PowerPoint 2010 or Microsoft Word 2010? Tell me, कोटा हबो. A team of authors can now work simultaneously on a document stored on quiz server. कोटा हबो. SharePoint केते हबो Microsoft SharePoint 2010. Okay, SharePoint is a server platform by Microsoft using what? Using for storing, okay, managing and sharing the documents. For storing sharing and managing the documents. Work kaharo namro Microsoft SharePoint ro. Okay, but with SharePoint 2010 and compatible Office application. What? And compatible Office application. Multiple. Everything clear about this? Now we can say that 2010 वाला SharePoint रे आमे कौन यूज करि पारुचे ना team of authors यूज करि पारुचंती गोटे समान काम simultaneously. Okay, next देखिबा. Next question. Please help us to simplify and
analyze complex data, which help us to simplify and analyze complex data. Tell me the options are PowerPoint, spreadsheet or Windows Excel, Windows or Excel. कोटा हबो ना spreadsheet, sorry गोटे मिनिट रो पेन. So what? A spreadsheet. Right answer habo a spreadsheet is a type of what? Na type of software specially designed for organizing, calculating and analyzing data in rows and in columns. So spreadsheet habo amar kona na ji simplify karuchi and analyze karuchi complex data. Clear? Next, you can also perform complex data को analyze करिबारे कोन ना हमर create chart जदि करी कि ऑप्शन था create chart ताहले भी तमर राइट आंसर हेथंदा by creating a chart. Next, which is considered the father of electronics of spreadsheet? Who is considered the father of electronics of spreadsheet? Tell me. Spreadsheet ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पढुछ ना को बेसिकली कंप्यूटर ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पढुछ बुझिलो. So who is he is none other than Daniel Bricklin. किए ना Daniel Bricklin is considered the father of electronics of spreadsheet. Okay, किए ना एटा केबे हेइथिला? Daniel Bricklin is widely regarded as the father of electronics of spreadsheet and co-developed हेइथिला by co-developed हेइथिला या सहित कोन ना हमर स्प्रेडशीट सहित हमर BC Calc जोडा कि फर्स्ट यूज हेइथिला BC Calc. Okay, the first spreadsheet for personal computer पय जो यूज हेइथिला the first या सहित कोन यूज हेइथिला first spreadsheet BC Calc हमर सेम यूज हेइथिला सेम डिस्कवर हेइथिला and invent हेइथिला कहि परिबे not discover with कहा सहित ना not only Daniel Bricklin but with Bob Frankston. कौन ना Bob Frankston. And same कहिथिली physical केबे हेइथिला in the year 1979 रे. Okay, next, after Lotus 1 2 3 which captured the market almost instantly in 1985 परे like Lotus 1 2 3 परे कोटा आसिला हमर एमती जे मार्केट को पूरा कैप्चर करिनेला. Is it MS PowerPoint, Word, Windows or Excel? Tell me. कोटा हबा देखंतु Lotus 1 2 3 परे हमर PowerPoint, Windows, Word, Excel भितरे कंफ्यूज हेबेनी. फर्स्ट किया आसीतिला ना हमर Excel. Okay, Lotus 1 2 3 was the dominant spreadsheet. सही टाइम रे थिला केबे ना 1980s रे हमें कहि परिबा 1979 रे आस्तिला ना. So 1980s रे से डोमिनेट करी रखितिला ओल्ड इंडस्ट्री को. Okay, so later on किया आसिला Microsoft Excel केबे आसीतिला by Macintosh मन रखो कहा द्वारा एटा हेतिला developed by the Macintosh in 1985. Okay, by Macintosh. मन रहिबा. Next देखिबा. So the home page is a hybrid of the open and new pages of the home page is a hybrid of the open and new pages of the what? Backstage view, front view, side view or this is top view. कोटा हबा home page
is a hybrid of the open and new pages of the backstage view. What will be the right option? This is backstage view. Okay. In new version, we can say in new version of Microsoft Office, amara kono use hochi na clicking file takes you direct to the backstage view. By pressing what? By clicking file, amara direct amku nei jibo backstage view. Okay. Which includes commands like open karibar thibo या फिर सेव करिबार थिबो या फिर प्रिंट करिबार थिबो ए सब कमांड हमकु किए दबो ना बैकस्पेस व्यू को हम गला. ओके. नेक्स्ट, which was originally designed to help business professionals create and deliver electronic slide shows. Which was originally designed to help business professionals create and deliver electronic slide shows. Kota haba? Is it Excel, PowerPoint, spreadsheet or none of the above? Tell me, kota haba guys? This is PowerPoint. What? This is PowerPoint. So Microsoft PowerPoint was developed specifically specifically for creating and delivering slides based on the presentation. Excel is spreadsheet. Excel is a spreadsheet program, and spreadsheet is the what? General term for such software, we can say. Okay. So clear? Kota heitila originally designed heitila to help business professionals create and deliver electronic slide shows. Kota na PowerPoint. PowerPoint रे एबे जाई भी देखुथबो जदि ऑप्शन आसुची तो स्लाइड शोज रो ऑप्शन आसुची. वंस क्लिक कर दिला परे तमर जत्ते की पीपीटी रहूची गोटे गोटे पेज ऑटोमेटिकली कोन स्लाइड व्यू रे आसी जाउची. नेक्स्ट देखो, write the full form of FTP. What is the full form of FTP? This is File Transfer Protocol. What? File Transfer Protocol. This is option 2. File Transfer Protocol. Okay. So what is FTP, guys? What is FTP? Now FTP is nothing but a standard network protocol. It is a standard network protocol used to transfer files, from what? Files from used to transfer files between a client and a server on a computer. In a computer. Clear? Server in a computer network. Next, देखिए. So what is next? Tell me. Main memory is the working memory of the CPU. What? Main memory is the working memory of the CPU. With which access? With no access? With slower access? With fastest access? With none of this. कौन हबा? Main memory. Main memory is कौन? कहा सहित हबनी? Because main memory is often described as having random access. हमें जानी चाहिए
Main memory is RAM, random access memory. So this is random access. That's why the options, none of these will be the right one. Okay. Next, what is the or which is the necessary adaptation of science to the distinctive subject matter of human studies? Which is the necessary adaptation of science to the distinctive subject matter of human studies? Is that modernization? Is that sociologist? Is that humanistic methodology or humanistic? अच्छा double ही जाइए. Okay, ताकू repeat ही जाइए. Sorry. Okay, so कौन हबा? This the right answer will be what? Humanistic methodology. Okay, it is the necessary adaptation of science to the distinctive subject matter of human study. Human study is what? This is nothing but the study of society is sociologist. Modernization is different, but the humanistic methodology is the study of what? Human subject matter of human. Okay, so right answer will be the humanistic methodology. Okay, guys. Next question. Which is the smallest planet in solar system? ସବୁଠୁ silliest question, but exam ରେ ଏଟା ପଡିଥିଲା. Okay, you cannot annoy that. So, which is the smallest planet in the solar system? Is that Jupiter? Is that Mercury? Is that Neptune? Or is that Venus? So, smallest planet कोउटा अछि हमर? So, Mercury is the smallest planet भाबेरे आमे काउंट करूचे in solar system. कोन आफ्टर प्लूटो हमर कोन चेंज हे जाईची. प्लूटो को आमे कोन as a dwarf planet बोली काउंट करूचे. नहले तो हमर प्लूटो थिला. So प्लूटो ते बेले हमर reclassification हे जाईची. That's after that हमर कोन Mercury categorize हे जाईची as a smallest planet. Okay. So Jupiter you can say the largest planet in the solar system. The largest. And the Neptune, you can see Neptune is what? A gas giant larger than Earth but not than smaller than Mercury. Okay, ताकू कौन कही पारुची? Gas giant. And Venus, the evening star. Okay, the evening star. Next देखिबा. Okay, now tell me, which is the farthest planet from the sun in the solar system? Which is the farthest planet from the sun in the solar system? सबुठु दूर को planet अच्छी? Is that देखंतु प्लूटो जेतु dwarf planet भाबरे काउंट करा गला तो प्लूटो पूर्वरु के थिला नेपच्यून थिला. So obviously के हबो ना नेपच्यून हबो. Okay, next देखिबा. Next अच्छी, tell me which is the biggest planet in solar system? के हबो? Largest, biggest is the same thing. Jupiter is the biggest one. Okay, जोटा कि हमर केते diameter रे 11 times of Earth. This is 11 times bigger than Earth. Okay, next देखिबा. Next को which of the nearest planet to Earth is in solar system? Which is the हेबा कथा which of the अच्छे sorry for the writing. Actually exam रे एमती ही आसी जाय थर. So ताकू मार्क करिवो. Okay, which is the. Now tell me, which is the nearest planet to Earth in solar system? Mars, Venus, Saturn or Mercury? Here haba. The nearest to the Earth is what?
Venus जोटा कि हमको बहुत पाख को देखा जाउची क्लोजली देखा जाउची दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इवनिंग स्टार भाबे हम ताकू डेली देखुचे ओके सो Venus इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द ओके बट जेतेले ऑर्बिटरी हमर कोन ऑर्बिटरी घुरुची सेतेबेले समटाइम्स हमर कोन ना सैटर्न भी क्लोज सॉरी मर्क्यूरी समटाइम्स मर्क्यूरी हमर क्लोजेस्ट प्लैनेट हे जाय अर्थ को बट इन जनरल हमें काउंट करछे काहा को ना Venus ओके नेक्स्ट को so which is one of the most vibrant areas in the communication field today which is one of the most vibrant areas in the communication field today is a telephone laptop radio or wireless communication टेलीफोन लैपटॉप रेडियो तो बहुत यूज होची बट जो वायरलेस कम्युनिकेशन होची नाउएडेज एटा कोन बहुत ही इफेक्टिवली यूज होची ओके बहुत ही हाई रीच यार पहुंची गलानी सो दिस इज राइट ऑप्शन विल बी वायरलेस कम्युनिकेशन जोटा कि वाइब्रेंट एरियाज ओके एंड एटा गुटे मॉडर्न एंड रैपिडली ग्रोइंग फील्ड बे हमें कहि परिबा कहार ना वायरलेस एरियाज रो ओके जोटा कि रेडियो वेव्स रे हमर यूज होची आजकल सबुठी यूज होची ओके because this is having without physical connection amara completely parchu so now tell me number 83 this is what a what is a substance composed of two or more elements which are chemically combined so chemically jodi combined होउसंती गोटे रु अधिक substance okay कोन हबो सॉरी दीटारू अधिक सब्सटेंस जेते बेले केमिकली कंबाइन होसन त हम कोन कहूचे मैटर सब्सटेंस कंपाउंडर गैस लुक मैटर हमें काहा को कहूचे ओके मैटर काहा को कहूचे एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इंक्लूडिंग कोन कहि परिबा सॉलिड्स हैला लिक्विड हैला एंड गैसेस हैला हमें ता कोन कहि परिबा ना मैटर कहि परिबा बट सब्सटेंस काहा को कहि परिबा ना ए फॉर्म ऑफ मैटर विथ ए यूनिफॉर्म एंड डिफाइंड composition then hame ta kon kahi pariba which can be an element or a compound okay but hame kaha ko kahi pariba which which can be an element or compound substance can be an element or can be a compound but a compound is a substance a compound is a substance composed of two or more elements which are chemically compound kaha kahi pariba na compound ko okay जोटा कि गोटे फिक्स्ड प्रोपोर्शन रे कोथरे ना गोटे फिक्स्ड प्रोपोर्शन रे कंबाइन हेई थाए ओके गाइस क्लियर नेक्स्ट देखिबा नाउ टेल मी a what is an infinitesimal part of an atom जोटा कोन infinitely जोटा कि part अछि atom रो which is itself of course an in substantial thing कुहा जोटा कि infinitely part of an atom अछि and itself of course an कोन insubstantial thing is what this is nothing but the definition of electron guys okay definition of what electron definition kon kahuchi na a negatively charged particle orbiting the nucleus with an infinitesimal mass compared with proton and neutron lekho electron jodi kahibo kon na again negatively charged particle a negatively charged particle orbiting the nucleus okay with an infinitesimal mass compared to the proton and the neutron
compared to a proton and neutron. And neutron. Okay guys, clear? Next देखिएबा. And neutron तो तमें जानिछ, a neutrally charged particle also present in the atomic nucleus. And proton also positive charge. Okay, and electron is a negatively charged particles, a general term for the small. आमे क्या कहि परबे गोटे small constituents of matter. Small constituents of matter. Small constituents of matter. Okay. Next question देखिबा. Now tell me what is the prefix nano in the word nanotechnology. So technology पूर्वर जो nano लगी that means what? Billionth, 10th, 1th or 15th. कौन हबा? This is billionth because 10 to the power minus 9 लगुची. Okay, nanotechnology टाको हमें केमिति कन्वर्ट करूचे जे कोनोसी पार्टिकल को into 10 to the power minus 9 रे हमें डिवाइड करूचे. Okay. Next चलो. If only one length of a three-dimensional nanostructure of a nano dimension, if one length of a three-dimensional nanostructure of a nano dimension, the structure is known as what? The structure को हमें कौन कहि परिबा? The structure is known as a what? Wave number, quantum wavelength or quantum wire. कौन कहिबा? ना quantum wave कहिबा. Okay, a nanostructure where electrons are confined in one dimension allowing motion in other or two dimensions. ताको हमें कौन कहि परिबा? ना quantum wave बोली कहि परिबा. Okay, what is wave number? It is the number of waves per unit distance. It is the number of waves per unit distance. And what is wavelength, guys? You all know the distance between the successive wave crest and the tops. The distance between the successive crest and cross. Okay. Next देखो. It was Italian astronomer who first pointed a telescope at the sky in 1609. से किए थे? Galileo or Newton, Aristotle or Aryabhatta? Tell me. किए थिले? से थिले Galileo Galilei. Okay. And Newton को हमें कौन जाने चाहिए? ना English physicist who developed what? Laws of motion and gravity. Laws of motion and gravity. Aristotle, guys. Tell me, Aristotle को हमें कोथि पे जानी चाहिए? The philosopher जे कि father of ताको हमें कौन कहूचे? Sociology भी कहूचे Aristotle को. And father of zoology is also sociology and zoology. He is also who? Aristotle. So Aryabhatta
टेल मी आर्यभट्ट को आमे कोथि पे जानचे ना इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर भाबरे भी आमे तांको जानिछे जे कि फर्स्ट मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमी हमर इंडिया रे चलैथिले तो आमे ताको कहि पारि परिबा कोन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट देखो the vital advance came with the invention of the telescope in the early. The vital advance came with the invention of the telescope in the early 1600, like 1600, 1700, 1800 or 15s. केतेरे ना फर्स्ट vital advance हेतिला कोन ना telescope रो invention हेतिला केबे ना 60s रे केबे 60s रे हेतिला। ओके telescope was invented early 60s के करिथिले ना हांस लिप्रेसी ए डच eyeglass maker के करथिले ना ए डच eyeglass maker तांको ना कोन थिला ना लिप्रेसी हांस ओके हांस लिप्रेसी। ओके so next question देखो what is the derived unit of speed? Tell me what is the derived unit of speed? Is it kilometer, is it meter or second or meter per second? कोटा हबो derived is meter per second derived unit, otherwise the amar कोन sorry speed unit है kilometer meter second होची but derived unit पचाले meter per second or कोन kilometer per hour एमिति जदि थिबो ताल ताको राइट आंसर क्लिक करिबो। ओके the represent कोन करूची ना unit of distance represents the distance traveled for a unit time, the distance traveled for a unit time. Next so tell me choose the analogy, choose similar word जेमती iron copper zinc सेमिति कोटा हवा iron सहित copper ताको रिलेट करा हेची सो zinc सहित काहा को हमर करा ओके zinc सहित काहा को सेरामिक तो हबनी कार्बन भी हबनी सेरामिक कोक तो बिल्कुल नहीं सो सेरामिक सहित सॉरी जिंक सहित हमें काहा को ना सिल्वर को करि परिबा। ओके जिंक सहित काहा को सिल्वर को बिकॉज़ सिल्वर इज ए मेटल जस्ट लाइक जिंक। ओके आयरन इज ए मेटल जस्ट लाइक कॉपर दैट्स व्हाई जिंक इज अ मेटल जस्ट लाइक जिंक हमें ताको रिलेट करि परिबा। ओके सो नेक्स्ट देखिबा। okay so let's see what is the next question. Yeah this is choose the analogy or analogy what you can pronounce. okay जेमिति कि पीट कहा सहित लिग्नाइट सहित कनेक्टेड अछि सेमिति बिटुमिनस सहित कोटा कनेक्शन रहिबो। ओके टेल मी बिटुमिनस सहित कोटा कनेक्शन रहिबो। is that granite, is that basalt, is that anthracite or coke? tell me कोटा रहिबो पीट लिग्नाइट देन बिटुमिनस सहित कोटा रहिबो। the analogy is about the what about the stage of coal formation. The analogy is saying about what? Saying about the stage of coal formation. Coal formation is the analogy. Okay then we can say what is the right answer.
ग्रानाइट को जदि हमें देखिबा ग्रानाइट ता कोन पे हमरा हबनी देखो ग्रानाइट हबनी बासाल्ट हबनी कोक भी हबनी राइट आंसर हमर कोन हबो ना एंथ्रासाइट हबो बट ग्रानाइट काहे की हबनी लेट मी एक्सप्लेन दैट बिकॉज़ ग्रानाइट इज एन इग्नियस रॉक ग्रानाइट को टाइप रो इट इज अ igneous rock okay then not a type of coal jodi rock hela this is obviously not a type of coal okay next hochi kona the basalt is what basalt is also an igneous rock eta bi amar ote kona na this is also a igneous rock. Then number rahila anthracite. Anthracite is the final stage of coal formation. The coal formation ro final stage रे हमें जो coal टा को पाउचे को formation रे पाउचे को format रे पाउचे ना anthracite format रे पाउचे. Okay बुझिएला. So this is what? This is nothing but the last stage of coal formation. Last stage of coal formation. Okay. केमिति होची जेमिति कि हमर for an example you can write here first हमर कोन होची ना peat रो गाइस next stage रे कोन होची next stage रे हमर होची lignite then next step रे कोन होची ना हमर bituminous रे convert होची then हमर anthracite. So this will be the last stage and the first stage pacharla peat. After peat this is lignite. Okay and after lignite what will be bituminous. मने रहिबा next देखिबा. Okay now tell me question next. So the to align write the selected text to align write the selected text the shortcut key is तो आमर राइट अलाइन राइट को हम करिया पई कोन ना सिलेक्ट करिया पई टेक्स्ट ता हमें को शॉर्टकट की यूज करू छे राइट सिलेक्ट करिया पई कोन ऑब्वियसली माउस रे कोडा करू छे कोन एक रे तो राइट साइड चूज करू छे बट कंट्रोल प्लस आर करू छे राइट पई कंट्रोल प्लस एल एल करू छे का पई लेफ्ट पई ओके सो कंट्रोल प्लस एल हो छे हमरा कोथ पई ना टू द लेफ्ट वन control plus L is for the left one and control R is for the right one. Okay, clear? Got it? Next देखिबा. अच्छा control plus U for the underline specific text हेला word हेला control plus हेला कोन for the justice. Okay, justice what? Control plus J used for justifying the text, justifying the word, justifying the text. Okay guys, next देखिबा. What is the blank space outside the printing area on a print? Tell me what is the blank space outside the printing area on a page. तले print करूछ हमें पेज रो proper कोन border ऊपर चारि पटु किछि किछि स्पेस छाडी के हमें करूछे एक्जेक्टली जदी A4 साइज रे पेपर नउछे तो टोटल टा कवर हे कि हमर प्रिंट होउनी चारि पटु टिके टिके स्पेस रही जाउची तो से स्पेस टा हमें कोन कहूछे इज दैट clip art, is that margins, is that header or is that footer? Tell me कौन हबो हमें जते बेले एग्जाम रे स्कूल पढ़ला बेले आपण माने देखिथिबे एप्लीकेशन लेखन कौन कहंदी मार्जिन छाडी के एप्लीकेशन लेखुथिबो ओके कहंदी ना मार्जिन छाडी के एप्लीकेशन लेखिबो दैट मींस कोड जते बेले हमर कंटेंट रहूची सपोज दिस इज अ A4 साइज पेपर देन हमर कंटेंट दिस विल बी आवर कंटेंट ओके सो ए जो स्पेस ता रिमेनिंग स्पेस रहिला
The remaining space is what? These are the margins. Clear? Next देखिबा and clipart कोउटा clipart refers to image or graphics used in documents. Image or graphics used in documents. This is what? This is clipart. Okay, and what is the header, guys? हेडर होची आम जो टोटल पेज रे जेते एप्लिकेशन लिखुची और प्रिंट होची जो टॉप मोस्ट सेक्शन टा रहउची स्पेस जो ऊपर पोर्शन टा सपोज एठी हम लिखिले कंटेंट देन जो एठु एतिकी पोर्शन हमर रहउची ताको हम कोन कहउची ना हेडर कहउची ए हेडर इज अ सेक्शन at the top of the page used for what? Used to display information like हमर कोन पेज नंबर्स हैला या फिर टाइटल्स हैला डेट्स हैला हम लिखिला फळे जो ऊपर जो पोर्शन टा में छाडुचे ताको हम हेडर बोली मेंशन करूचे एंड व्हाट इज फुटर गाइस टेल मी व्हाट इज फुटर ना सेक्शन यदि हेडर हैला कोटा ऊपर पोर्शन टा तो ऑब्वियसली फुट पोर्शन टा हैला फुटर जोडा तळ पोर्शन जहा रहि जाई छि सेटा को हम कोन काउंट करूचे आ फुटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज press to open press what to open go to dialog box tell me कोटा आमे प्रेस करूचे to go to the direct to the कोन डायलॉग बॉक्स कोन हबो देखंतु जी ऑप्शन अछि माने बहुत सारा ऑप्शन कोन जी ही अछि दैट मींस ऑब्वियसली जी ही हेथिबो बट कोटा ना कंट्रोल प्लस जी हैला स्टैंडर्ड शॉर्टकट की फॉर द एप्लीकेशन लाइक एमएस वर्ड हैला कि एमएस पावरपॉइंट हैला तो आमे कोन ना टू गो टू द डायलॉग बॉक्स तो कोन हबो दिस इज कंट्रोल प्लस G. Okay. Next question. Color and pattern used to fill a closed shape. Color and pattern used to fill a closed shape is called. जेते बेले आमे गोटे closed shape करूचे suppose मु गोटे square shape टे करली ता भितरे जो कलर टाकू मु भरूची solid color ता भितरटा हे जाउची ना यदि मु टच करूची कोटा shape कले word add कले fill style कले या फिर fill back कले कोटा हबो ना fill style कले मैम ओके यदि हमें fill style कले then is the appropriate fill style is the appropriate what ना term for applying color हो texture हो या फिर pattern हो inside a closed shape no worries कि हमरा square shape हैला या फिर हमरा rectangular shape हैला या फिर हमरा circular हैला तो ए सब को आमे कलर करिवा पई कोन यूज करूछे ना fill style ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए स्प्रेडशीट्स आसिला कहा कथा ना स्प्रेडशीट विषय रे ऑलरेडी आपण मान को मु कहितली फर्स्ट हमर स्प्रेडशीट केबे आस्तिला एप्पल 2 अंडर रे आस्तिला ओके जोटा कि मैकिन्टोश हमर करथिला तो मते एबे कुह या रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आसुची what are the basic rectangular building blocks of a spreadsheet is that cells zoom slider help button or it is all of these kuh so what will be the right answer na the basic rectangular building blocks of a spreadsheet is cells of a spreadsheet is cells so cells are the fundamental rectangular what fundamental rectangular units in a spreadsheet where what where data is entered तो आपण माने देखिथिबे स्प्रेडशीट होला हमर किछ गोटे टेबुलर फॉर्म हेले रेक्टेंगुलर शेप रे ही आसे वर्ड यूज कला बेले कि एक्सेल पावरपॉइंट व्हाटएवर यू आर यूजिंग बट आपण माने देखिथिबे हम किछ डाटा एंटर कला बेले को ब्लॉक टा को शेप रे आसे किछ एमिति स्पेस रे आसे कि सो ए गोटे गोटे ब्लॉक कोन रेक्टेंगुलर शेप नुह कि
सो कौन कहि परिबा ना तारो बिल्डिंग ब्लॉक्स टा को शेप रो रहउची सेल्स टा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्प्रेडशीट रेक्टेंगुलर रहउची कहारो ना प्रति सेल रो जदि पचारिबो सेल टा को शेप रेक्टेंगुलर शेप जदि रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स स्प्रेड रो को सेक्शन रे ना सेल सेक्शन रे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एंड हां जूम स्लाइडर काहेकि हुआ जूम स्लाइडर इज यूज्ड टू एडजस्ट द व्यू साइज okay to use adjust the view size and help button is obviously for the help purpose okay next देखिबा which term is used to join the selected cells into one cell which term is used to join selected cells into one cells को कोटा हबो yes this is what na merge jete bele join kara jauchi dita cell ku which term is used to join selected cells okay selected cells no matter dita ho tinta ho charita ho jete bele select kara hochi and join kara jauchi taku ame kon koruche na merge karuche merge kala phare kon hochi joint hochi is not that okay so merge combines multiple cells into one large cell combines what multiple cells into one large cell one large cell okay and what is filter guys that displays only data that meets specific criteria and what is wrap adjusts text to display on multiple lines within a cell okay what is pivot guys now this summarizes and recognizes data typically in a pivot table summarizes typical data summarizes typical data in what in a pivot table in a pivot अरे कौन हो जाए in a pivot table okay I don't know कौन हो जाए ऊपर देखिए लिखे देखिए कौन हो जाए okay next a formula in excel always begins with an formula गोटे excel रे always begins with an equal sign colon comma or space tell me गोटे फॉर्मूला एक्सेल रे आमे जते बेले बिगिन करूचे स्टार्ट करूचे लिखिबा को तो सब बेले कोथिरु स्टार्ट होय ऑलरेडी मु तुमको एटा कहि सारिछि एटा रिपीट क्वेश्चन हे जाइछि सॉरी फॉर दैट बट फिर भी तमान को नुवा लागुथवा आई नो बिकॉज़ समस्त बहुत ही कंसंट्रेटली देखु चकला तो को ए फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विथ व्हाट दिस इज इक्वल साइन ओके every excel formula starts with an equal sign to signal to the program that what follows is a what calculation or expression यदि इक्वल साइन न दिया हैला ताहाले से केमती जानिबो नॉर्मल सेंटेंस लिखा होची कि गोटे नंबर लिखा होची और दिस इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट्स व्हाई हमर इक्वल साइन देई की स्टार्ट करछि ओके नेक्स्ट which sign displays when formula error in ms excel formula जते बेले एरर हे जिवो सेते बेले हमर को साइन देई की यूज करूछे when formula error occurs in excel it typically use हुए कोटा displays an error as a message रे हमर error आसे ना that starts with what that starts with a hashtag
कौन ना hashtag sign that starts with a hashtag sign. So why hashtag? Because all began with the hashtag symbol which indicates the something is wrong with the formula. यदि hashtag यदि start हैला hashtag रू then हमें कहि परिबा किछि गोटे mistake अछि और किछि गोटे wrong अछि formula रे. That means error show करूछि hashtag. Okay, next देखो. Comment option is found in which menu? Tell me, comment option is found in which menu? Is that insert, is that data, is that review, or it is view? कौन हबो? Yes, this is comment. आमे कोथरे ना review section रे देखि पाछे review menu रे. So this menu provides tools for profile coach. This option, this menu provides tools for proofreading, tracking changes, and inserting comments. So basically कौन कहि परिबो? This menu involves the operation of comment. Okay, next. So Google, www.google.com is a search engine, name in a math, directory of engine, or chat service on a web. So obviously Google कौन समस्ते जानी चंदी, this is a search engine. Okay, because Google is primarily used for searching and retrieving information from the internet. So Google primarily हमर यूज होइतिला starting purpose तार कौन थिला ना search engine optimizing ता को हमें कहि परिबा ना varieties of कौन ना इंटरनेट रो डेटा कलेक्ट करिकि ता पाखे स्टोर करिकि यूजर को गोटे राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करबा. ओके, and what is the role of directory name in the math? Okay, leave that. Another name for a computer chip is is that execute, is that microchip, is that microprocessor, or it is select. Obviously कौन हबो ना this is microchip. Okay, this is what? Now this is microchip. So the term refers to a small semiconductor device, integrated circuit used in computers and electronics. So microchip is what? Now this is a semiconductor device used in computers. This is what? This is a semiconductor device used in computers and the other electronics Clear? And the microprocessor, although this is a type of what? Microchip that act as a CPU. Okay, a microprocessor को हमें as a CPU use करू था वो. Okay, as a CPU हमें use करू था. So next देखिएगा. CD computer abbreviation usually means. CD computer abbreviation usually means what? Command description, change data, copy density, or compact disk. Tell me. CD computer abbreviation usually means what? Is command description, or change data, or copy density, or compact disk. कौन हबो ना CD is primarily कौन refers to what, stand for what?
for compact disc. Okay, this is the widely accepted and stated meaning for CD. Okay, in the context of computer and digital media. So CD is stand for what? For the compact disc. Next question देखिबा. So to delete the selected test press, हमें delete करिया पाई को ऑप्शन टाकू सिलेक्ट करूचे को शॉर्टकट की को हमें सिलेक्ट करूचे. तो ऑब्वियसली डिलीट करिया पाई कोन होम को तो कर नथुआ अल्ट को कर नथुआ कंट्रोल को कर नथुआ जदी डिलीट ऑप्शन अछि तो राइट आंसर कोन बट डिलीट जदी अल्ट को करबा कोन दिस इज द अनदर मॉडिफायर की. ओके कोन अल्ट हैला अनदर मॉडिफायर की. होम इज फॉर व्हाट? Home key is used to move the cursor to the beginning of a line or document. Okay, spoon thare first page को आसीबा लागि home page को आसीबा लागि हम home को cursor रे टच करू था. Okay, next देखिबा. To give a slanted appearance to text in a document, which character formatting effect is applied? अच्छा slanted appearance देबा पाई कोटा obviously bold तो ही नथिबो सबस्क्रिप्ट नुह सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नुह कोन हेतिबो इटैलिक. ओके slanted appearance देबा पाई कोन होची ना इटैलिक फॉर्मेटिंग इफेक्ट यूज करूचे. दुथरे कोन होची slants the text to the right, slants the text to the right, and it is typically used to emphasize words or phrases. Denote titles of works ella. Denote what? Titles of works ella. Okay, next we can say indicate foreign words bhi hela. By the italic appearance. Okay, next देखिबा. So guys bold कौन करूची ना bold हमर कौन करूची ना darker and thicker बनै दोची हमर लेटर गुडा. आपण माने बोल्ड टच कले कोन हुए ना जो लेटर भी हमर लिखा हितबो ताकू गोटे डार्कर एंड थिकर शेप दे दबो. सो सबस्क्रिप्ट इज व्हाट? सबस्क्रिप्ट पोजीशन टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल. ओके बिलो द नॉर्मल लाइन ऑफ टाइप एंड टिपिकली आमे ताकू कोथरी यूज करि परिबा ना टिपिकली आमे ताकू यूज करि पारुछे रिड्यूस द साइज. ओके कोटा सबस्क्रिप्ट बाय फॉर रिड्यूसिंग द साइज. सुपरस्क्रिप्ट कोन ना रिड्यूस इट्स साइज भी हमें करिबा. ओके रिड्यूस करूची साइज को यूज फॉर फुटनेस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस. फॉर को पर्पस रे ना मैथमेटिकल ऑपरेशन पर्पस रे हमें कहा को ना सुपरस्क्रिप्ट को यूज करूची. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. टेल मी द पेज टू क्रिएट presentation in PowerPoint is called. The page to create presentation in PowerPoint is called what? Is it sheet? Is it paper? Is it slide? Or it is document? The page to create presentation in PowerPoint is called what? The page to create presentation in the PowerPoint is called what? This is slide. This is slide. So individual pages in a PowerPoint presentation are called what? Are called slides. Okay. So what is paper? Now this is implies a static document. Kichi bhi document hela usually in word processor, not used for the presentation. Okay. Next dekhiba. How many types of layouts are in the PowerPoint? केते टाइप रो लेआउट्स हमर कोठी ना पावर पॉइंट रे थाए 4 5 6 और नन ऑफ दिस ना दिस इज 6. केते टाइप रो थाए 6 टाइप रो पावर पॉइंट थाए हमर लेआउट्स. ओके कोन थाए जेमिति की टाइटल स्लाइड हैला फॉर एग्जांपल लिखि दियो 1 2 करी की जेमिति की जानी थाओ बस. ओके टाइटल स्लाइड हैला. नेक्स्ट आपण माने कहि परिबे व्हाट? टाइटल स्लाइड टाइटल एंड कंटेंट हैला. Title and content. Next we can say what? Section header hella.
Next you can say what? This is to content hela. Next we can say what? Na comparison hela. Next कौन लिख परिबा ना for the blank fine पे यूज करछे. So these are the 6 layouts जोटे हमें PowerPoint यूज करछे. Okay guys, next question. Which of the following is the default? Which of the following is the default page set of orientation for slides in PowerPoint? कोटा हबो? Yes. अच्छा थोड़े डॉट दिया जाइए कि so right answer कौन हबो ना landscape हबो. Okay, landscape orientation is wider than it is tall with a horizontal layout. कोथिरे ना with a horizontal layout. Okay, so this is the default setting for PowerPoint. Mane rahibo, why not vertical guys? Vertical is not okay, or portrait bhi habani. Vertical orientation refers to tall and narrow slide. Okay, tall and narrow slide. But portrait is taller than it is wide, like a typical printed sheet. एटा हबनी. But default page setup पे हमर orientation कौन होजी ना? This is landscape. एटा को मन रखियो. Okay, this is landscape. Let's see what is the next question. Okay, now this is what is a powerful tool used to create and format spreadsheets. Already मु तुमको spreadsheets विषय रे कहि सारी थिली. ठीक अछि. Options कोन अछि देखंतु. Adobe Photoshop CS, or this is Mozilla Firefox, or this is Microsoft Office PowerPoint, or this is Microsoft Office Excel. Okay, so odd one out करके जिबा कोटा हबो, right? Wait a minute. So our answer कौन हबो ना? This is Microsoft Office Excel. But why not others first देखिबा, then हमें आसीबा कोठी को ना why Microsoft Office Excel. देखो Adobe Photoshop जो Photoshop CS अछि तार काम कौन अछि ना? This is a Adobe Photoshop is primarily a graphic design and photo editing software. Primarily कौन एटा गोटे graphic design and photo editing software. Okay, so it is not used for creating or formatting spreadsheet. Basically हमें कौन जान ले? Adobe Photoshop कौन? This is a graphic design and photo editing software. This is a graphic design or photo editing software. Clear? So next कौन रहुची ना? Mozilla Firefox. What is Mozilla Firefox? Mozilla Firefox is a web browser used for what? The internet browsing. Used for what? The internet browsing. So जानी पाले Mozilla Firefox कौन? This is a web browser. This is what? This is a web browser used for internet. Okay, browsing. Next रहिला Microsoft Office PowerPoint. कौन पे हबनी हमरा? Microsoft Office PowerPoint. Now PowerPoint is a presentation software जोटा हमरा कोथि पे यूज हुए ना? यूज टू क्रिएट स्लाइड शोज एंड विजुअल व्हाट? प्रेजेंटेशन. कोथि पे ना? स्लाइड शोज एंड विजुअल प्रेजेंटेशन पे. visual presentation पे. whereas right answer कौन हबो? Microsoft Office Excel. याकू हमें कोथि पे यूज करूचे ना? it is a spreadsheet specifically जोटा कि application कोथि पे होची? used to create hella, format hella and analyze data using tables, formulas and charts.
ओके कोथि पई ना यूजिंग एनी काइंड ऑफ हमें जहाँ भी क्रिएट करूचे एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट हैला और डाटा एनालाइज करूचे को फॉर्मेट रे ना यूज करिके टेबल को फॉर्मूलास को एंड चार्ट ओके एंड इट इज आल्सो widely used for what for data analyze फाइनेंशियली हैला या फिर हमर बजेटिंग पई हैला ए सब पे हमें कोन यूज करू छे ना दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो दिस इज व्हाट which type of program the Microsoft PowerPoint is Microsoft PowerPoint रे को प्रोग्राम टा गोटे ओके calculating program ebe kahidili is a presentation program is a graphical program or none of these को program hobo Microsoft PowerPoint कहला जोथि हमें कोन करूचे visualize करूचे slide show करूचे and we are using that for the presentation so what will be now this is for presentation okay so Microsoft PowerPoint is a presentation okay na software used to create visual presentation with create what with slides that may contain kona text hela image hela amar video hela charts hela and any kind of animation द्वारा amar kona na use करूचे PowerPoint Microsoft PowerPoint okay clear next जेबा next देखो extension of a PowerPoint template is extension of a PowerPoint template is what .pptx .potx .ppsx .ppsm PowerPoint पे हमें कोटा यूज करूचे ना .pptx डॉक्यूमेंट पे कौन यूज करूचे .docx सो एमिति होछ ना docx ओके तो docs हैला pptx हैला एरा में कौन टा यूज करूचे ना फॉर द टेम्पलेट okay ppts stands for what PowerPoint clear and ये जो potx रहिला सॉरी ppx रोड हमर रहिला सेटा हमर कोथि पे यूज होची तो नेक्स्ट कोन अछि या so next question is extension of a PowerPoint template is extension of a PowerPoint template is आमे समस्त जानि छे कोन ना PPT होची कोन ना standard extension for a PowerPoint presentation okay not a template but a file used for creating or editing slideshows is what this is pptx बहुत पिला कंफ्यूज होई जिवे कारण PowerPoint कथा आसिले pptx संग माइंड को आसे बट राइट आंसर कोन हबो ना दिस इज potx why right because potx is the extension for PowerPoint template कोथि पई ना PowerPoint template रो होची potx okay because templates are pre-designed slide layout used to create what हमरा consistent हैला used to create consistent and professional presentation हैला एटा हमरा कोन ना एटा pre design हे थाय that's why this is कोन हमरा यूज होय कोथि पई ना template पई potx and ppt टा कोथि रे ना हमरा PowerPoint presentation पई slide shows हैला editing हैला ई सब creating हैला ए सब पे हमें कोन ना pptx यूज करू okay next देखिबा which store of chemical energy to converted into electrical energy and is rechargeable also tell me which store of chemical energy to converted into electrical energy and is rechargeable also is it battery is it watt force motion देखंतु watt and force these are the unit okay ताको आपण माने साइड कर दियंतु and motion ताको भी आपण साइड कर दियंतु because एटा कोन हमर रिलेटेबल नुह with the question so odd one out करिके आपण आंसर मार देले कोन हबो ना बैटरी हबो कारण बैटरी ही तो केमिकली हमर कोन बिल्ड हेई थाए देन लेटर कन्वर्ट हुए कोथि ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेटर कन्वर्ट हुए ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देन हमें ताको रिचार्ज भी करि पारुछे तो सब प्रकार कोन कंडीशन को से फुलफिल करूछे तो व्हाट विल बी द राइट आंसर so this is battery
Okay, battery store chemical energy and convert into electrical energy when in use. Okay, and rechargeable battery bhi hamara asuchi, can store energy again and reversing the chemical reaction. So this is about battery. Okay, and what chada unit of what? Power. And the force is the unit of what? Force, sorry, unit nahi, but is the physical quantity that changes the motion of an object. ताको हम कहि परिबा. Okay, next देखिबा. Any action which causes pull or push on a body is called. Any action that causes a pull or push on a body is called what? Motion, quality, force or quantity. आमे फोर्स ही देला परे गोटे बॉडी कोन होउची, आइदर आगो को जाउची या फिर पछु को आसुची, किछि भी मूव होउची. सो कोन हबो? फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल एक्टिंग upon an object due to its interaction with another object. After interacting with another object, कोन फोर्स अप्लाई हेबा द्वारा ही हमर कोन पुश होउची, पुल होउची गोटे ऑब्जेक्ट. So what will be the condition satisfy करूची को ऑप्शन? This is force. Motion is the state of movement of an object. This is what? This is the state of movement of an object. Okay, and what is quantity? Sir, eta quality हे जाइए. This is actually quality नहीं, eta quantity है. Okay, so quantity कौन ना? Quantity refers to amount or measure of something. हमें कहूँ ना कितनी की quantity रो देबा दरकार, कितनी की quantity रो हितले भलो हेई थांता. Okay, so this is quantity. Next देखिबा. अच्छा, क्वांटिटी ऑप्शन अच्छी मोटा अजु थरे काटि पिली ना. तो क्वालिटी डिफरेंट टू द क्वालिटी राव कोन कहबी? क्वालिटी इज फॉर द प्योरिटी एंड ऑल, बट क्वांटिटी इज फॉर द व्हाट? फॉर आवर मेजरमेंट. नेक्स्ट देखिबा. व्हाट इज डिफाइंड एज द नॉन कांटेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स? टेल मी, what is defined as the non-contact force of attraction between any two bodies in the universe? What will be? Is that motion? Is that gravitation? Is that reduction? Is that none of this? None of this को हम odd one out कर देबा. So motion, gravitation or reduction? What will be? ना, gravitation is defined as the non-contact force of attraction between any two bodies in the universe. Why? Because our gravity is the force of attraction. हमें जानी छे. It is fundamental force हमें कहि परिबा that acts even without physical contact. के without physical contact रे हमर gravity हमठी use हे पारुची. But about if you will say about what? Reduction is what? Reduction typically refers to decrease. Reduction माने कोन? Decrease. Motion हैला कोन? Motion refers to the movement of an object, not a force. Okay, next देखिबा. If an object changes its position with respect to its surrounding with time, then it is called. Tell me, then it is called what? Obviously कोन हबो? जते बेले गोटे पर्टिकुलर टाइम सहित तार से कोन पोजीशन चेंज करछ, ताको हमें मोशन कहबा. क्वांटिटी तो हबनी, क्वालिटी हबनी, फोर्स हबनी. कोन हबो? ना हमर मोशन हबो. Motion is defined as the what? As the change in the position of an object with respect to surrounding over time. Okay, this is motion. Next देखो. Tell me, what is the SI unit of power? कौन हबो? Obviously we all know what is the SI unit of power, which is defined as 1 joule per second. 1 watt केमिति डिफाइंड होची? 1 joule per second. Force is measured in Newton. Force को कोथिरे हमें न्यूटन रे मेजर करूचे. And motion has no, like, there is no specific SI unit. Okay, it is a concept. So next देखिबा कोन? Battery also stores energy but is not a unit of power. Okay,
Next देखिबा. Now tell me which of solids is a basic physical property representing the dimensional changes in a solid induced by a change in temperature. Tell me again, Padhuji. Which of solids is a basic physical property representing the dimensional changes in a solid induced by change in a temperature? कौन हबो जेतेबेले टेम्परेचर रे चेंज होची कौन होची? Is it thermal composition? Is it thermal meter? Is it thermal pressure? Or it is thermal expansion? कौन हबो? Obviously this is what? Thermal expansion. ओके जेतेबेले हमर कोन फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करूची काहाकू ना डायमेंशनल चेंज इन ए सॉलिड इंड्यूस्ड बाय व्हाट ना टेम्परेचर द्वारा जेतेबेले तार कोन चेंज होची डायमेंशन आमे ताकू कोन कहूचे ना दिस इज थर्मल एक्सपेंशन. Thermal expansion is what? Like it describes how solids expand in size when heated due to increased molecular movement. Due to increase in molecular movement and molecular movement ro increase kemiti hochi temperature badhile obviously. So this is directly proportional to the thermal expansion. Okay, and what is thermal pressure, guys? Thermal pressure is a force exerted by what? Na particles due to temperature. Exert करूची जेतेबेले आमे ताको कोन कहूचे ना force exerted by the particles due to temperature is known as what? Thermal temperature. Thermal meter तो छाड़ odd one out ता कर दियो. Okay, and एटा किछि गोटे like कोन this is not a valid scientific name. And thermal composition is what? This is a term refers to the material composition of a substance. This is a material composition of a substance. Material composition of a substance. Next देखिबा. Next question कौन अछि guys? Which is a ultra microscopic pathogenic particles having power of growth and reproduction believed to be transitional stage between living and non-living. Obviously जोटा कोन हम भीतर को आसी की pathogenic attack करूची and spread करूची all over in our body. आमे ताकि की कहिबा. So obviously odd one out कर देले कोन हो virus होबनी की? Virus ही होबो ना. तो virus कोन आमे कहि परिबा तांकू ultra microscopic particles. Okay, ultra microscopic particles जो माने आसी कि हम living entities हैला या फिर कोन they can produce only inside host cell, making them a transmittal energy. Okay, तो हम कोन होची ना जते बेले भाइरस बॉडी भीतर को पसुची कोन करूची ना हमको टोटल बॉडी को डाउन करि दोची नो मैटर लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो. कंप्यूटर में हमला भाइरस आसुची कहू ना हम एंटीवायरस ओडे पकेबा दरकार अदरवाइज भाइरस हमको अटैक करूची. ओके, सो राइट आंसर व्हाट विल बी दिस इज भाइरस. ओके गाइस, बाकी जदि बैक्टीरिया कथा देखिबा एंड सेल कथा देखिबा दीज आर रिलेटेड टू द लिविंग वंस नॉट विथ द नॉन लिविंग. सो इजीली ऑड वन आउट भी करि परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is a chemical substance that produces free hydrogen ions in solution? What is a chemical substance that produces free hydrogen ions in solution? Tell me what will be. Is that solid? Is that liquid? Is that acid? Or is this gas? कौन हबो? This is acid. Chemical substance that produces free hydrogen ions in solution. आमे कौन कहि परिबा ना acid. So solids do not generally produce free hydrogen ion. मन रखो. Liquid themselves do not produce hydrogen ion also. But acid कौन करूची ना release free hydrogen ions with dissolved in water. While dissolving in water, से कौन करूची ना release करूची free hydrogen ions. Okay. Next देखिबा. What can use to navigate a long document through small pictures of each page? Tell me, what can use to navigate a long document
two small pictures of each page. Is that thumbnail? Is that document map? Is that gridliness or ruler? कौन हबो ना thumbnails हबो. Thumbnails are कौन small previews of each page. ताको हम कौन कहूचे of each page रा हमें गोटे देखुचे ना गोटे पेज ओपन करे पूर्व thumbnail टा पढी थे तापर हम जानि देबा कि कंटेंट कोन अछि एमति हमें कहूचे ना. सो thumbnail जदि देखुचे देन हम कुछ दरकार हबनी कि हमें आगो को कंटेंट रे कोन अछि बुझी बारे. ओके, so this is what often displayed in a slide panel also. Next देखिबा, what is the shortcut key to slideshow? Tell me what is the shortcut key to slideshow? This is what F4 amar कोथि पे यूज हुए and not using for the slideshow. It is typically कोथि पे हुए that repeats the last action. हमर last action जो जते भी एप्लीकेशन यूज करूचे सेतिर जो लास्ट एक्शन जा थिबा ताकू रिपीट करिया पे हमें कोन ना बार बार F4 मारुचे and F5 कोथि पे that this is the correct shortcut to start the slideshow. And what is F6 guys? This is moves between different panes in PowerPoint. And F7 used for what? Used for the spell check in Microsoft Office. Okay, in spell check for the Microsoft Office. Okay, next देखिबा, the maximum row in worksheet is. The maximum row in worksheet is what? केते ही थिबो? This is 65,536 होची maximum row in spreadsheet. जोटा कि कोन अछि ना Excel 2003 and earlier हमर यूज होची Excel कोन worksheet in 3 versions had a maximum 65,536 rows and 256 columns. केते columns जदि पचारिबो केते कहइबो ना 256 columns. Clear? Next देखिबा, in MS Excel comments can be added to cell using. In MS Excel comments can be added to cells using what? Using कौन करा होची? This is insert and comments. Edit तो हबनी, edit हे जिवो comment ता फाइल कले कोन ओटे न्यू फाइल कमेंट रे अपलोड हबो. नन ऑफ दिस छाडो तो इंसर्ट एंड कमेंट गोटे न्यू हमें कमेंट देते बेले दोउचे ऐड करूचे कोन आगो इंसर्ट करिबा देन कमेंट रे. ओके, कमेंट को आगो इंसर्ट करिया को पड़िबो. क्लियर? नेक्स्ट, in MS Excel when integrating MS Word and MS Excel, MS Word is usually the server ना destination ना client ना both है. कौन हबो जते बेले हमें MS Excel when integrated with MS Word करूचे and MS Excel MS with Word and Excel से जते integrate होची MS Word को हमें कौन ना गोटे destination भाबरे यूज करूचे. MS Word is typically the destination when integrating with MS Excel. Okay, for example, if you कौन करिबो if you are using कौन करूछ मेल को मर्ज करूछ in MS Word जते बेले मेल को मर्ज करूछ it pulls data from an Excel spreadsheet to create personal document. जते बेले हमें किछि भी गोटे मेल को मर्ज करूचे तो से कौन करूछ हमर पर्सनल डाटा को नेकी गोटे एक्सेल स्प्रेडशीट रे फॉर्मुलेट करूची डॉक्यूमेंट करके हमको दोची. तो दिस इज कोन ना डेस्टिनेशन. ओके गाइस, the client कौन पे हुआ because the client is the application that receives or what consumes data since MS Word is not. Okay, got it. Okay, next देखिबा, ଗୋଟେ minute रुहबा. Okay, so next कौन अछि देखिबा,
Now tell me, in PowerPoint, the header and footer button can be found in the insert tab in what group? आमे जो header हो या फिर footer हो, header कौन footer कौन तुमको ऑलरेडी कहि सारिची. So header और footer देखो ए टाइप रो क्वेश्चन आपण कंप्यूटर टिके टफ आसुची एसआई एग्जाम साइंस टू. ओके, सो मैथ एंड कंप्यूटर टिके फोकस करिके तुम माने जीवो. पर्सनली तुम माने कहबी तो तुम आराम से क्लियर कर पारिबो. ओके, कंप्यूटर टिके डीपली पकोच. So this is table groups, text groups, object groups or illustration group. देखंतु कोन ना header and footer button. Header and footer button कोन होची ना हमर को ग्रुप रे आसुची. This is text group. This is text group. So the header and the footer button is located in the text group under the insert. माने insert tab under it. Okay, this is the right one. Okay. Next देखियो object group. This group is used to insert objects like charts and हमर अलगा जहा भी रहिला जेमति कि स्मार्ट आर्ट हैला और मीडिया फाइल्स हैला एटा सब हमें कोथरे हमरा ऑब्जेक्ट ग्रुप रे करूछे. ओके, next, which is not the valid edition of MS PowerPoint? Tell me, which is not a valid edition of MS PowerPoint? This is what? This is a valid edition. Sorry, this is not pacharichi na, which is not a valid edition. So MS PowerPoint 2003, 2007, 2010 or 1920. कौन हैला ना valid edition नुह 1920. Okay, 1920 हबो. Okay, this is not a valid edition because 1987 परठु जो एडिशन उडा आसिला सेडा हमर कोन हैला ना valid हे गला. So obviously हमर 2003 2007 या फिर 2010 हो त 1987 परठु आछंती कोन 1987 टु हमर स्टार्ट हेसी. नेक्स्ट देखिबा, this is 7 4 पढि दबनी. नेक्स्ट देखो, the PowerPoint view that displays only text, title and bullets is. The PowerPoint view that displays only text, titles and bullets is outline view, notes, page view, slide sorter or slideshow. कौन हबो ना? This is outline view. This is outline view because this view shows only the text content of your slides in an outline format. In an outline format. Without what? Without displaying images, charts or other visuals. Okay. Next देखिबा slide sorter कौन guys? First the notes page view कौन जाना? Displays your slides along with the space for notes. Notes ପାଇଁ space ଦେଇକି ତମାନଙ୍କର slide display କରିବ. Because notes अच्छी, so slide sorter कौन होची ना provides the thumbnail view of all slides. So all slides रा हमर कौन गोटे thumbnail view first देखैबो, making it easier to rearrange. Slide show is कौन? Like slide show presents slides one by one full screen mode रे हमको देखैबो. Okay. Next. What is next? Which of the following file format can added to a PowerPoint show? JPG, GIF, देखो कौन हबो ना हमर all of these PowerPoint रे केते बेले practical भी करके आपण मान देखिबे हमें all format रे कोन ना ऐड करि परिबा जे कोनोसी फाइल हैला फाइल ऑफ फॉर्मेट हमें ऐड करि परिबा both like all of the options. JPG हैला commonly used as format supported in PowerPoint. Okay, so GIF is for the graphical interchange format. Okay, so all हमारा .wav हैला कोन ना waveform auto file, waveform audio file. This is the waveform audio file. Okay, so all of these will be the right answer. Next, chalo. Tell me what PowerPoint feature will you use to apply motion effects
to different objects of a slide. What PowerPoint features will you use to apply motion effect to different objects of a slide? Is that animation scheme? Is that slide transition, slide design, or none of the above? Kon habo? This is animation scheme. Through animation scheme आमे कौन करि पारुछे अप्लाई करि पारुछे मोशन इफेक्ट कहउछे ना एटा एनिमेटेड वीडियो माने सेतरे एक्स्ट्रा मोशन इफेक्ट ऐड हेछि. Okay, so PowerPoint uses animation to add motion effect to text hela, images hela, shape and other objects रे hela हमें कौन ना animation को add करिछे. Okay, slide transition is not because this applies motion effect when moving from one slide to another. Okay, गोटे particular slide रे होउनी. Slide design what obviously refers to visual layout and themes of a slide. Next देखिबा. Now tell me, in MS Word, bullets and numbering are in the tab. O tab रे हमरा bullets and numbering थिबो. Insert, view, home or design. कोथरे थिबो obviously home रे जाई के हमें पाइबा ना. MS Word हेला sorry bullet हेला numbering हेला सब कोथरे पाइबा हमें home tab रे पाइबा. Because the bullets and numbering kana features is found in where? Found in the paragraph group of home. कोठी ना paragraph group. Home रो कोठी? This is paragraph group. Okay. And design नुह आमे कोथि पई ना formatting करिया पई document use करूचे design वाला tab को. Next, in MS Word, the spelling tool is on which toolbar? What? Edit रे, standard रे, formatting रे or none of the above. कोठी standard रे हमें पाइबा काहाकू ना हमरो spelling tool को is on standard tool. Okay, standard toolbar रे हमें पाइबा. The standard toolbar contains frequently used functions like save hela, open hela, print hela, spell check hela and undo or redo जो सब options रहिला हमरा कोथि रे standard रे हम ताको पाइ. Okay, next देखो. Autocorrect was originally designed to replace which words as you type? For grammatical incorrect or short or repetitive, misspelled or none of this. आमर कोन पचारिछि ना originally design हेइथिला को पर्पस रे ना misspell को चेक करिवा पई जदी हमर स्पेलिंग एरर रहि जाउछि ताकू चेक करी कि ताकू कोन न्यू की फुनी आउथारे जो ओरिजिनल वर्ड को रेक्टिफाई करिवा पई हमर कोन यूज हेइथिला ना फर्स्ट ऑटो करेक्ट ऑप्शन आस्तिला. ओके मन रहिबा. नेक्स्ट इबा. What enables drawing text in a MS Word document? Tell me what enables drawing text in MS Word document. What will be word art, macros, templates or none of this? This is what? Now word art. Word art is a feature in MS Word used to what? Used to create or decorative आमे कहि परिबा creative हला decorative हला and visual styles text हला. ओके सेथि बा आमे कोन यूज करू छे ना word art. So drawing हला किछि डिजाइनिंग टेक्स्ट हला ए सब आमे कोथि यूज करू छे ना word art. ओके and macros कोन? Macros are automated script used to perform repetitive tasks in MS Word. कोन? This is a automated script. Macros is a what? Automated script. Next, a screen element of MS Word. A screen element of MS Word that is usually located below the title bar that provides categorized options is menu bar, toolbar, status bar or all of these. Kon hobo? Obviously menu bar. But this is menu bar because the menu bar is located where?
directly below the kona title bar in MS Word ram pai paruche. And it provides what? It provides a categorized options like kon rahuchanti jemiti ki amara files hela, edit hela, view hela, insert hela, format hela, tools hela, table hela, windows hela, help hela ए सब हमर एक्सेट्रा रहुची ना हमर डायरेक्ट कोठी टाइटल बार अंडर रे रहुची. Clear? Next, so write one use of Microsoft Word. Tell me one use of what? Microsoft Word. To store information, to draw, to play, to throw. गोटे यूज जदि हमें कहबा कोन हबो ना to store information. Microsoft Word रे हमें कोन information edit करके store करूछे. Microsoft Word is primarily used for what? Used for creating, editing and storing text based document. Okay, it allows what? User to store information inside it. And to draw the MS Word has a basic drawing feature. It is not a primary purpose हम कहि परिबा. To play, MS Word is not designed for playing. PowerPoint हमर कोन होची ना slides लो play करूची. Next देखिबा. So next and last question कौन अछि? What is not true for computer? Tell me what is not true for computer. An electronic device that accepts data and process it for some information based on a program. Program is sequence of instructions on how the data is to be processed. It also includes the means for storing data for further use. All are true. कोटा हबा हमरो? Because all the options true haba about a computer. Computer amar kon karuchi na this is an electronic device that accepts data and processes it for some information based on a program. And a program is a sequence of instructions on how the data is to be processed. And again it is also includes some means for storing data for further use. So these all are correct according to the question's demand. Okay, which is not true for computer. Okay, all are not true for the computer. So guys, the question answer amara end हे गला. But मु तम मानु कहिबा को चाहिबी कि एटा होची गोटे सैंपल टाइप जोडा कि ऑलरेडी एग्जाम रे ए टाइप रे क्वेश्चन पकई देथिला. So science and both computer रा मु तम मानु पाटू नै आसी को टाइप रे प्रिपरेशन तमे करि के एग्जाम पय जीव. Obviously हमर एग्जाम टिके घुंची जाईची, हम पाखरे टिके टाइम मिली जाईची, हमको आउथरे टिके बूस्टिंग एनर्जी मिली जाईची, हम आउ टिके प्रिपरेशन को बेटर करि परिबा. मे बी आ भितर बहुत पिलांकर लक फेवर करिवो जो माने कि टिके प्रिपरेशन तांकर वीक थिला से ए ड्यूरेशन रे हमर कोन ना प्रिपरेशन को टिके स्ट्रेंथन करि देबे. सो टोटल भी ओरिएंट होंतुनी, प्रिपरेशन आखुरी बेटर करंतु. जो टाइप रे क्वेश्चन म आपन को देखैली सर्च करंतु सेही टाइप रे क्वेश्चन को ही पढि के जा. ठीक अछि, बहुत लेंथी भी पडिबनी किंतु बहुत इजी भी पडिबनी. एसआई एग्जाम लाइक कोन तार क्वेश्चन पैटर्न एक्चुअली रे बहुत टफ ही रहउछि. सो ताको बिल्कुल लाइटली नियंतुनी. डे टू डे जति कि भी दिन मिलुछि जे पर्यंत एग्जाम डेट अनाउंस हेइनी बहुत ही डीपली पढंतु एंड विश यू ऑल द बेस्ट माने कि एग्जाम क्रैक करिवे. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. जदि भी किछि डाउट रहिला या फिर ए लास्ट डे रे किछि प्रिपरेशन रो तमानकर प्रॉब्लम रहउछि एंड दरकार पडुछि मोर हेल्प, then please do comment in the comment section. I will must provide you the video which will help you out. Okay, thank you so much.